आगे बढ़ते चले जाते हैं तो धीरे धीरे हमें और भी चीजों का ज्ञान होता चला जाएगा और जितने हॉरोस्कोप साल में देखते चले जाएंगे तो प्रैक्टिकल भी आइडिया बढ़ता चला जाएगा। आपका मेन था कि प्रैक्टिकल आइडिया होने में थोड़ी सी मुश्किल हो गई, अभी और करते चले जाएंगे, आज थोड़ा और करेंगे तो और आइडिया हो जाएगा। तो लिटिगेशन शुरू करते हैं। तो लिटिगेशन तकरीबन हर पार्ट ऑफ इवेंट में आ जाता है, चाहे वो एजुकेशन हो, मैरिज हो, चाइल्ड बर्थ हो, हेल्थ हो, करियर हो, या वैसे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाए, प्रॉपर्टी व्हीकल में भी आ जाता है। तो आज लिटिगेशन कर लेते हैं। तो लिटिगेशन के 3 हाउसेज हैं, हर इवेंट में हर चैप्टर में वही होगा हमेशा, हाउसेज एंड कॉम्बिनेशंस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। लिटिगेशन में वो तो नेगेटिव पार्ट है, तो उसके जो हाउसेज हैं दे आर 6, 8 एंड 12। तो 6, 8, 12 का पहले तो बेसिक जो मतलब है वो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। 6th हाउस रिलेट्स टू litigation, 8th house relates to insult and obstacle, and 12th house relates to loss and imprisonment. So when 6, 8, 12 is signified in Dasha Bhukti Antar, and any of the Dasha Bhukti Antar planet is Rahu, Ketu or Sachan, then the native is embroiled in litigation. So 6, 8, 12 should also come in Dasha Bhukti Antar. In addition to that, one of the Dasha Bhukti Antar planets should be Rahu, Ketu, Sachan. Then the event will happen. If Rahu, Ketu, Sachan do not appear in Dasha Bhukti Antar, litigation will not happen. That can be some other problem, but that problem will not be litigation. There can be trouble, some other trouble. जी घोष साहब बोलिए। हाँ घोष साहब बोलिए। हाँ हाँ भेज रहा हूँ। So any of the Dasha Bhukti Antar planet should be Rahu, Ketu, Sachan, and Rahu, Ketu, Sachan should signify 6, 8. If they are signifying 2, 7, 11, that means it is marriage. It is not litigation. So basic thing is combination. Basic thing is not a planet. So in certain cases, in certain events, some planets are essentially required for happening of the event. In case of marriage, Venus is natural significator and is not essential to come in Dasha Bhukti. It is not essential. It comes or it doesn't come in Dasha Bhukti Antar, marriage can happen. But in case of litigation, Rahu, Ketu, Sachan should appear in Dasha Bhukti. And even if they are conjunct or aspect Dasha Bhukti Antar planet, even then they can pass on their natural significance of litigation to the planets, but somehow or the other Dasha Bhukti Antar should have Rahu, Ketu, Sachan. Okay? Now after this, the question is, once the litigation has started, in case of any criminal activity, the person will ask for a bail. If it is not a criminal one, then the bail will be granted by the police or the bail will be granted by the court, if it is bailable. If it is not bailable, then you have to move a bail application in heinous crime only, like murder, etc., or heinous crime, theft, snatching, etc. Normally, the bail is not easily given. Hello. पता नहीं, मैडम मैं ढूंढा नहीं सकता, अब मैं कैसे ढूंढूं कि अब मैं पढ़ाना शुरू करूं। There is a pop-up coming. There is a pop-up comes, and that pop-up, there will be a yes. So if there is a heinous crime, then
the person will ask for bail. Otherwise, there is no question of bail. The bail is granted. Just for knowledge only, bail is not granted if some person is it is difficult. Means the judge apprehends that the person may not appear again, or he is a habitual offender. So suppose someone is a habitual offender and he has already murdered two persons in previously and he commits a third murder, then the bail will never be granted. Right? Secondly, if he doesn't get a person who will give his bail, so that means the administration is not sure that he will appear again, or he has come after so many summons and वो क्या कहते हैं उसको, summon होता है और क्या होता है, warrant etc. Then they also apprehend that he may run away. Like in case of Sahara Shri, he was not coming after so many summons. So now the bail is not easy for him, right? Third, that person is very influential. So if he is very much influential, then he can hamper the investigation. So in three conditions, also the bail is not given. But if the combination which I will be writing here, if such combination come, even then the bail will be given. So the combination of bail are 10-11, 6-11, 10-6-10. So and even 11. If any of the combination is there, then the bail is granted. Once the case starts, the first step is to get the bail. It is not that you will go in the first date and you will win the case. Normally it is a long process. So this is bail, and another combination which the person will ask is win in litigation. Win in litigation. So the combination of win in litigation are similar to bail. 10-11 is equal to 6-11 is greater than 6-10 is greater than 1-6. So if 10-11 and 6-11 there, it is the strongest combination of winning the litigation. 6-10 is weaker, 1-6 is weakest. So when 10-11 and 6-11 is there, what is the type of winning? Like madam, you have taken a lakh rupees from me and you are not repaying me back. So there is a litigation. So I put a litigation against you. So if 10-11, 6-11 come in my horoscope, in Dasha Bhukti Antar, so I'll win the case, then the magistrate will say that you will have to pay me 1 lakh rupees plus the expenditure of the court case, plus say you have taken the money for 5 years, so 5 years interest should also be paid to Mr. Umantare. So it is complete winning. So in case of 6-10, the magistrate will say that just pay 1 lakh, matter finishes. So I will not get the interest part of it. And if 1/6 there is there, then the magistrate will say, Mr. Taneja, you have win the case, now you can go home. So I don't get anything. Now 10-11, you would have understood why 10-11 is win, because 10 is status, 11 is gain of status. But have you understood why 6-11 is win? 6 is litigation, 11 Gain, right? So one thing more about 6-11. So if there is litigation, then the 7th house is the house of the open enemy, or the person against whom the court case is. So if 11 is there, then this 6th house acts as 12th house to the 7th house. It doesn't act as the 6th house, it acts as the loss of the enemy and your gain. So this is not true only for the litigation, this is also true for any competition. 6-11 is the best combination for any competition, any litigation, professional
professional competition, sports competition, any type of competition, even students also there, students also there. Any type of competition like politics. In case of any election also, 611 is the best combination for winning any competition, because 12th, 6th becomes 12th of the opposite person, and 11th my gain and his loss. So you gain out of the loss of the other party. Loss of the open enemy. Like another example, like there is company Pepsi and Coca-Cola, both are making the same product. So if combination of Coca-Cola becomes 611, then what will happen? Then Coca-Cola will eat out the market share of Pepsi. It is eating out the market share of Pepsi. If 1011 is there, then you grow. You just grow. Other doesn't lose anything. You grow a big. You grow big. Not on the cost of that. Not on the cost. He will sell his product, but you have made such a product that that product is something different, which others do not make. So it is born with the golden spoon in mouth, not in the silver spoon. It is golden spoon in mouth. Gosha, ji Gosha, ji Gosha. सर YouTube पे देख सकते हैं सर. सर फिर मैं लिंक भेज दूंगा आपको, यही कर सकता हूँ इस समय. हाँ मैंने और कर दिया, अभी कर दिया, जस्ट नाउ. So this is all about 611, right? Now there is another question. The question is, if there is a problem of litigation, sometimes the court case is settled out of court. Sir, one thing, in the competitions, can we say that 611 is more effective than 1011? Yes, you can say. You can say 611 जो होगा वो ऐसा भी है that the person comes from the competition. 1011 he is parachuted. Okay. Parachuted like in Congress party, Nehru Gandhi family person are always parachuted. They do not come from grassroots level. So 1011 is always parachute. The 611 person will be more polished because he has really worked hard to achieve anything. Right? Now outside court settlement. सर ये जो विनिंग का लिटिगेशन है सर, ये अपना राहु केतु सैटर्न में देखना है, उसी में देखना है सर, 3 प्लैनेट्स में? No. Then the planet are not important. Then planet are not important. The court case will not end in the same Dasha Bhukti Antar. The court case may end in after 5 years, 10 years, 20 years. So when I went to Chandigarh, so someone told me that my court case is pending from 85. मैं कहा 1985, बोला no, not 1985, 1885. So his court case is pending from 1885. So last 4 generations are still fighting the same case. So the court case may not end in 10 years, 20 years, 30 years, you do not know. And in India, you know, हिंदुस्तानी कानून दादा खरीदे पोता भरते. चलो तो फिर बच्चों के 6 से 12 सामने होगा. और सबके 6 से 12 होंगे थे. ठीक है सर, ये फिर अपना मेजॉरिटी ऑफ द प्लान में देखना फिर कि अगर इसका हमारे फेवर में आएगा कि नहीं रिजल्ट. या majority means when Dasha Bhukti Antar comes 10-11, 6-11, then you will win. Dasha Bhukti Antar man will come in 6-12, then you lose. So in case of litigation, then the majority plans must be having 6-12, and if you will win, then majority will be having 10-11. So in some cases, it is possible that the same planet signifies 6-12 and 10-11 also. So we'll see certain examples, then we'll be able to understand better. So outside court settlement is signified by 5 and 9, no planets. There are no planets, means any planet can do. If 5-9 is there,
then it is outside court settlement. So it is like, madam, like again you have taken lakh rupees from me. So if 5/9 comes, so in your horoscope, then you will come to me. So you will tell Guruji, so I have taken 1 lakh rupees from you. I agree to that. So let us not fight the case in the court. Do not get. So what I'll do, I cannot pay. But the truth is, I cannot pay 1 lakh rupees, but I can pay that 1 lakh rupees in installments. So what you do, you take this 20,000 rupees, rest of 80,000 rupees you take of a month each. I'll pay. I'll say okay, let's, because 5 is 12th from the 6th, 9th is 12th from the 10th, means administration. So we will settle out outside the administration and the court, and 5/9 is love. So in case of 5/9, we win money also and we win relation also. In case of 6/11, you do not win the relationship because 6 and 11 do not win the relation. 5/9 will win the relation. So if 5/9, 10/11 is there, for example, there can be another So combination. it should come in the horoscope of the person Both who's of taken. Both. Both of them. So if 5/9, 6/11, 5/9, 10/11 comes, for example, in my horoscope. So what will I say? That I will not take 1 lakh rupees, I will take 1,50,000 rupees. So then you will be ready to pay also. So in case I have say 5/9 and 6/12, so 6/12 is litigation also and loss in litigation also. So if someone asks about winning, winning is this, and losing is 6/12. And is 5/9, 6/12 is there, then you will say, sir, I can pay you 10,000 rupees only. You want 1 lakh rupees? I cannot pay 1 lakh rupees. If you want to take 10,000 rupees in 100 easy installments, 100 easy monthly equally installments, then I am ready to pay. So that means you are on a loser side. So I am in a loser side. So if I find that such a combination is there, 5/9, 6/12, so I will not sit for the settlement. So I'll sit for the settlement when good time comes. So now let us. So 5/9 both should be there. No, any one of them. Any one of them, 5 or 9 will do. If both come, then it is more better. So let us summarize everything. Litigation is 6/12 plus Rahu, Ketu or Sachin in DBA. So if 6/12 comes in Rahu, Ketu, Sachin, and any of the Dasha Bhukti Antar of Rahu, Ketu, Sachin is there, and other two planets also signify 6/12, then litigation will happen. Losing the litigation is 6/12. Getting paid is 10/11, 6/11, 10, 6, 10 or 11. Winning litigation is 10/11, 6/11 or 6/10 or 1/6. 10/11, 6/11 is the strongest combination of winning litigation. 6/10 is medium, 1/6 is just a consolation. 10/11, 6/11 is the best. 6/10 is just okay, 1/6 is consolation. 5 and 9 houses are outside court settlement. 5/9, 6/11, 5/9, 10/11, then the settlement is in the favor. And 5/9, 6/8, 12 is their settlement is not in favor. Okay. So this is all the summary of the winning, losing, outside court settlement. Abhi I'll show you certain planets and I will explain which type of planets signify which type of litigation, like A1, A2, A3, 4, 5. So I have made 4 types. I have written here 4 types of planets of A series: A1, A2, A3, and A4.
So A1 is having just 1 6 out of 6 8 12, just 1 6 in the nakshatra. A2 is having 1 8 in the planet, 12 in the nakshatra, and 12 in the sublord. So such type of planet which carry only single 6 8 or 12, these type of planets do not signify any litigation. This is not litigation. There are B type of planets also. B type of planets are like 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 9. B2 is 4, 5, 7, 4, 5, 8, 3, 4, 8. B3 is 4, 5, 9, 4, 5, 12, 4, 5, 12. So now here what you see 6, 6, 8, 8, 12, 12. Such type of planets also do not signify any litigation. So if same house is signified again, this is not a litigation. There can be a challan, I don't disagree with. If you say jump a red light, there is a challan. This can be there, but you cannot say it is a litigation. Now C group is like 4, 5, 6, 4, 5, 8, 4, 5, 7. C2, 4, 5, 12, 4, 5, 6, 3. Now here you see there are two different houses. 6, 8, 12, 6, 8, 12. So if the houses are different, from here the litigation starts. This you can say litigation. But it is small, not a big litigation. It is a small litigation. Two combinations. Two different houses. 6, 8, 12. When the houses are same, like 6, 6, even 6, 6, 6 will not give a litigation. Even 8, 8, 8, 12, 12, 12 will not give litigation. 6, 8, 12, 6, 8, 12, such type of planets in vertical will give the litigation. Now let me show you another D. 4, 6, 12, 4, 7, 9. D2 is 4, 3, 5, 3, 8, 12, 3, 9, 12. D3. D3 is 4, 5, 7, 7, 9. Now this 6, 12, 8, 12, 8, 12 are horizontal, whether in the nakshatra or in the sublord or even the planet. Such type of planets signify litigation. This is big litigation. Big one. Dada kharide, pota bharte. And E group is the toughest of all. E group is like 4, 5, 6, 4, 5, 6, 12, 4, 5, 7. Now what you find, planet and nakshatra both are signifying litigation. Now if I go to E2, 4, 5, 8, 4, 5, 6, 12, 4, 5, 7. Now here 6, 8, 12, the whole group is strong. So this is not the whole group, this is the whole group. So E2 will be stronger than E1, stronger for litigation. Now coming on to E3. E3 will be still stronger. 4, 5, 6, 8, 4, 5, 6, 12, 4, 5, 7. E4 will be still stronger. 4, 5, 6, 4, 5, 6, 12, 4, 5, 6. So this way, yes, sir. Please ask. सर थोड़ी सी स्क्रीन नीचे कर लो सर प्लीज हल्की सी Yeah.
ठीक है सर? जरा सी और बढ़िया सर, बढ़िया। 4, 5, 6, 4, 5, 6, 12, 4, 5, 6. So now planet, nakshatra, sublord, all are signifying litigation, so this becomes stronger, and we can have another even more stronger E5. 4, 5, 6, 8, 4, 5, 6, 8, 12, 1, 2, 3, 6, 8, 12, something like that. So that will be more stronger. So like E group is the toughest of all. So the litigation may not end throughout the life, and if it ends, and it is a havoc. Now you must have been remembering some Jessica Lal murder case, something like that. I even do not remember how many years back it started. Maybe 15, 20 years back. I don't remember. Now 30 years imprisonment is given, and still ये the नहीं, that is not Jessica Lal murder case. वो कोई दूसरा case है. Nitish Katara case. So now the lady still wants to go to the Supreme Court. So it's possible the lady may die and the litigation still remains. ठीक है ना? वो litigation नहीं खत्म हुआ, जिंदगी खत्म हो गई, litigation नहीं खत्म हुआ. So A, B and C. A, B is not a problem at all. C can be a small problem. C and D are the actual litigations. ठीक है? ये है. इस ठीक है, जैसे इसमें 5 बहुत सारे हैं और 5 9 आउट ऑफ कोर्ट वो सेटलमेंट. out of court settlement will be not in favor then. अच्छा, मैंने तो वैसे लिख दिया just to नहीं, give you an idea अभी तो to what type of planets will give how big problems. जैसे इस केस में ही है, लाइक 5 बहुत सारे हैं अगर होता है. How things out of court settlement not in favor. Like this is there na 4, 5, 10, 4, 5 is 5, 4, 5. Now here 11 and 10 comes. Okay. Then what will happen? That this will be out of court settlement in favor. Because 10, 11 are in the nakshatra and sublaw, 6, 12 are in planet nakshatra. So 11, 10 becomes stronger. So it will be in favor. So abhi what I am trying to show you in this particular example is that single 6, 8 and 12 are there in either planet nakshatra sublot, or 6, 6, 8, 8, 12, 12 are repeated again and again in planet nakshatra sublot. It doesn't signify litigation. ठीक है? तो ये अभी ये बताने का मतलब ये है यहाँ पर. ठीक है? तो ये हो गया. This is done now. ये हो गया. Now let me show you some horoscopes related to litigation. So you will be able to know how big litigation will be there in which type of planet. ठीक है? वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ. आवाज म्यूट कर लेना. मेनका जी आप अपनी आवाज बार बार ऑन कर लेते हो. ओके सर. आवाज म्यूट करेंगे तो दूसरों को सुनाई नहीं देती. घर में बच्चे खेल रहे हैं, क्या हो रहा है? सर जी इसका प्लेस बता देना. दिल्ली सर, दोनों का दिल्ली है सर. ठीक है? सो ये फर्स्ट हॉरोस्कोप है. ठीक है? इसमें फर्स्ट हॉरोस्कोप में पहले केतु है. केतु is 4, 6, 8, 9, 11, 2, 7, 4, 8, 11. So we cannot say any big litigation is there. ठीक है? Venus does not signify any litigation. 3, 5, 10, 3, 5, 10, 3, 5, 10. Sun is also 5, 8, 2, 7, 5, 8. This is also not litigation. Now when we come to moon, then we find litigation. So moon is 6, 8 and 12. 12 is in the nakshatra and 6, 8 is in the sublord. So it is E type.
E type we can say. Now when we come on to Mars, it is 8 and 6. So this is C type. So C type is not a big issue. And when we come to Rahu, it is D type. 812. That is strong one. Strong one. horizontally it When I go to Jupiter, it is E type. 12 is in the planet, 8, 12 is in the nakshatra, and 6 in the sublot. When I go to Saturn, that is D type. 8, 12 is in the sublot. When I go to Mercury, again it is E type. 6 in the planet, 8 in the nakshatra, 8, 12 in the sublot. So how many E types are there? E types are Mercury, Jupiter, Moon. D type is Saturn, Rahu, and C type is Mars. So majority planets are signifying litigation somehow. So if Mercury Dasha is there, then there can be litigation. When we see Ketu, Ketu also lies somewhat D type. Like 6, 8 is in the planet. So if it is in the planet, it will be but weaker. But it is there. So Ketu Dasha is there, Ketu is natural malefic. So Ketu, Rahu, Ketu, Jupiter, Ketu, Mercury will be really bad. But when Venus Dasha comes, big problems are all over. Small problems will come. Dasha is not signifying, so Bhukti Antar will be small problems, not big ones. But Mercury Ketu would have been a havoc in his life. ठीक है ना? अभी देखते हैं another planet, horoscope, and this is also a horoscope. अच्छा सर इसके में जैसे मरकरी केतु में आपने बताया तो मरकरी जैसा है मरकरी में प्रॉब्लम है लेकिन वो दशा भुक्ति अंतर वो राहु केतु सेटल नहीं है लेकिन मरकरी की दशा मरकरी की दशा राहु भुक्ति comes अगर तब आएगा then there will be a problem. ठीक But once Mercury Rahu will start the litigation, then it will continue. Then it doesn't end. ना? मतलब सारे प्लैनेट्स का ऐसा नहीं है कि केतु में ही 6 से 12 देखना है या फिर नहीं ऐसा एक राहु बता देगा राहु अकेला नहीं कर सकता आपको 2 और चाहिए कम से कम बिग लिटिगेशन इज अ बिग थिंग इज नॉट अ स्मॉल थिंग मीन बिग लिटिगेशन इज अ बिग थिंग आपका चालान कट गया ये बिजली का बिल ज्यादा आ गया ये छोटी मोटी बात होगी वो कोई मोबाइल है आपने इंश्योरेंस कराया इंश्योरेंस नहीं मिला आपको आपने लिटिगेशन कर दिया 50,000 का 40,000 का उसको मैं लिटिगेशन C type हो सकता है, that is C type. But when we are talking on D and E, that means then for years together, the litigation will remain. Now coming on to this horoscope, Ketu is 12 nakshatra and the planet. So this is B for Bombay, B type. So B type is not a big issue. Venus is 812. So Venus is D type. So it's bad. Sun is nothing, Moon is nothing, Mars, Rahu, Saturn, Mercury. They all are E types. That means once now which dasha is in operation? Venus dasha comes in life. So when Venus Mars will start, the problem will start then. Venus Mars, Venus Rahu, Venus Saturn, Venus Mercury. So it will continue happening. So after Venus dasha ends, Sun dasha starts, Moon dasha. So all the problems which were in Venus dasha, it will go. But if following dasha continues the problem, then the problem will continue. Dasha can erode all the problems. Yes. वीडियो नहीं आ रहा है सर वीडियो नहीं आ रहा अब अपने आइकन पे क्लिक करके मेरे आइकन पे क्लिक करेंगे वीडियो आ जाएगा सर मैंने किया था लेकिन नहीं आ रहा है आप एक बार फिर से कर लीजिए प्लीज मेरे कहने पे किसी और के पे क्लिक कर लीजिए देवंजन के अशोक जी के और पे क्लिक कर आया क्या पता जी आ गया नहीं आया सिर्फ उनका फोटो आता है बिल्कुल कुछ नहीं आता लेकिन आवाज तो अच्छी तरह से सुनाई देता है मेरी आ रही है आवाज हाँ आवाज तो आ रही है लेकिन वीडियो नहीं आ रही है होना नहीं चाहिए एक बार फिर कर कीजिए यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है एक बार फिर लीजिए प्लीज ओके आप देखिए
ना नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। हम्म, क्या कर सकते हैं? हम्म, अ, कैसे करें? एक बार फिर लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए। ओके आई विल ट्राई या मैक्सिमम ये हो सकता है कि मैं वेट कर लेता हूँ आपकी, तो ओके लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए, और ओके या इसी विंडो को बंद करके दोबारा से वो ज्वाइन कर लीजिए, फिर हो जाएगा। ओके ओके मैं 2 मिनट वेट कर ले, गप्पे मार लेते हैं तब तक। ओके थैंक यू हाँ जी, दशा देखते हैं तीनों प्लैनेट्स में आनी चाहिए जब DDA कर रहे हैं तो जो सेक्टर की दशा आती है यहाँ पे हाँ जी, तो तीनों में आना चाहिए ना कॉम्बिनेशन में। या मैं जस्ट आई एक्सप्लेन। सर अगर ये डी में शो हो गया दैट मींस वो तो पूरी दशा खत्म करता ही No, no, है। I'll just explain the question. You both have same question. Like Venus Dasha starts, like in this house. Venus will not give, Venus Sun will not give, Venus Moon will not give, Venus Mars will give. So Venus Mars, but Rahu Ketu Shani has not come. No. So Venus Mars Rahu, the litigation starts. Okay. Either of the three. Rahu Ketu or Sachin. Rakesh, you have to remember. Now Venus Rahu starts, then Venus Rahu Sachin will be a problem. Then Venus Rahu Mercury can also be a problem. Why Mercury? Because Mercury is also showing litigation. Venus Rahu Ketu cannot give because Ketu is not showing. No. Okay. In this particular horoscope, Ketu is positive. So Ketu cannot give the litigation. If Ketu is signifying something different. Ketu is signifying travel, means something different. Something. Venus Rahu Venus can give. Venus Rahu Mars can give. Whichever are signifying. So any of Dasha Bhukti Antar should be Rahu Ketu certain, then the problem will come. ठीक है? इसकी प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज तो बहुत ही कम मतलब होता है, नहीं बहुत होती है सर। क्योंकि सर दशाभुक्ति अंतर में तीनों जो प्लेनेट है उनका होना Therefore, I am saying if majority planets signify litigation, only then the litigation will be there. If 2-3 planets normally signify litigation, normally big litigation do not come in life. Now, after this, now the question comes: if there is any criminal complaint, then the question is about the imprisonment. The question is about the imprisonment. To his family, 3 away from home, 8 is insult, 12 is jail, 4 is hidden. So 4 already we had explained that 4 is hidden for love also. Here also it is hidden. So for love also it is hidden. For litigations also it is hidden. So we'll do it. So jail is 2, 3, 8, 12 plus Rahu or Ketu. So if 2, 3, 8, 12 come in Dasha Bhukti Antar, the person is imprisoned by the government. So 2 is family, 3 away from home, 8 is insult, 12 is jail. So here family will be in distress because 8, 12 is there. So here family will be in distress. सर आपका आवाज चला गया।
मैं कोई घर पे थोड़ा है, मेरी आवाज चली गई थी। ओके, कमिंग बैक टू नहीं तो मैं घर पे हूँ तो मेरी तो बीवी ने आवाज ही बंद कर दी है। अच्छा अच्छा, अभी हंस रहे हो, लगता है घर पे नहीं हो। नहीं सर है बेडरूम में, वो बोली कि आप अपना लेक्चर सुनो, मैं जरा सो लेती हूँ। अच्छा अच्छा, तभी हंस रहे हो। तो वही मैं सोच रहा था कैसे हंसी निकल रही है घर पे। सर वी हैड लॉस्ट द कनेक्शन, आप थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए ना। हाँ, कहाँ से कनेक्शन लॉस किया? सर वो यही आप जब आपने शुरू किया ना ये फैमिली का ये जेल का आप डिस्कस कर रहे थे नंबर्स, बस उसके बाद। ओके ओके, so the combination relate to jail and other type of imprisonments, abductions, etc. I'll be using these 5 houses: 2, 3, 8, 12, and 4. 2 is family, 3 is away from home, because 3 is 12 from 4, 8 is insult, 12 is the imprisonment in jail, 4th is hidden. So the combination of jail is 2, 3, 8, 12, and either of Rahu Ketu will appear in Dasha Bhukti Antar. If Rahu Ketu do not appear in Dasha Bhukti Antar, then jail will not be there. Either. Either. It can be both also. So why 2, 3, 8, 12 is jail? Because 2 is family. Now here 2 is with 8, 12, family is in distress. 3 is away from home. So you are in distress and away from home with insult. So then 12 becomes the captivity. So therefore 2, 3, 8, 12 is jail. So any combination which is very strong towards the bad, or even the, not bad, worst, every combination which is worst, then it has to come in Rahu and Ketu. Only Rahu and Ketu can give worst type of events. Worst are accident, dacoity, rape, jail, others I am writing. So the other one is kidnapping or abduction. Kidnapping, when the nappy of the kid is in problem, so that is kidnapping or abduction. So the combination is 2, 3, 4, 8, 12 plus Rahu Ketu. So these are the symbols of Rahu Ketu. These are the symbols of Rahu Ketu. So now here 4th house is hidden. So Rahu Ketu also signifies sudden events. So kidnapping will be sudden, and the kidnapper will take the child to a hidden place. So it can be a child, it can be a hijack of an aeroplane. So in that case, all the people sitting in the aeroplane will have this combination 2, 3, 4, 8, 12, right? It can be some government official abducted, or a rich man or rich man's son, or if there is any enmity. In case of there is enmity also, there can be abduction. Abduction can be due to ransom, or it can be due to enmity. So now the first question will be, will the child, whether the child is kept well or not. So mother will ask first question, when the child comes home after school, he asks for the ice cream. Will the abductor provide ice cream to my child, Coca-Cola to my child, etc. So whether he is kept well or not, right? So if the DBA planets are benefics, child is kept well. मेरा पुत्र ना आइसक्रीम खांदा है, आइसक्रीम. Benefics means Jupiter, Venus, Mercury, Moon, Sun. So majority are this, like Rahu, Jupiter, Venus, Rahu, Jupiter, Moon, Moon, Rahu, Venus. So the child is kept well. They will take care of the child and charge from the father. And if Dasha Bhukti Antar is malefics, majority are malefics, child is not kept well and can be beaten, harassed, like Rahu Mars Sacha.
Saturn, Rahu, Ketu, Saturn, Mars. So he will not be capable, he may be beat. Okay? Now, coming back home. Will he come back home? So coming back home is 2, 4, 11. So when 4 is with 8, 12, it signifies something different. 4 is with 11, then 4 is not house, 4 is home. So if 11 is there, that means normally the child will come back within days, day or days, normally. If it doesn't come within day or days, normally he will come. They will not be keeping him for months or weeks. Okay? So if 11 is together, all the possibility of child coming, and if 7, 8, 12 comes, he will be murdered. The 11 doesn't come, and 7 comes, then he will be murdered. So we This 2, 4, 11, 7 and 12 will be in subsequent periods. yes, subsequent, obviously. It is possible then the antara changes also. एक तरह से प्रश्न भी हो गया है. Yeah, it is Prashant also. Kind of, huh? Yeah, it is Prashant, obviously. So in case of 7, 8, 12, then he will be murdered. Now, the other type of captivity is going underground. Kabutar. Kabutar, you know what? No, sir. Pigeon. Yeah. Pigeon, what is pigeon? Kabutar, you don't know. Do you not know? Pigeon, you know. No, yes. Tell me. What is pigeon? Kabutar, you don't know. But do you know pigeon? What is pigeon? No, it is not same. No, it is different. Okay. What is it? तो क्या हुआ कबूतर बता दो. So कबूतर is going underground. Yeah, what I mean to say is going underground. Right? So if there is a criminal, possibility is that he goes underground, fearing that police will catch him. The combination is 3, 4, 8, 12 plus Rahu, Ketu or Saturn, Rakesh. तीनों चाहिए. 3, 4, oblique है sir. This is oblique. Any one of them. So 3 is going away from home. 4 is hidden place. 8, 12 is problem. But 2 is not there. 2 is not there means the family is happy. Family is happy that if he is underground, he is safe. If he will not be, Family is somehow connected. Huh? Family is somehow connected. Family is somehow connected. Obviously connected. Family knows where he is. It is always there. It is not possible that the person is underground and family doesn't have any idea. Okay, no? But family will not tell the police. Similarly, some people, especially Pakistanis and Punjabis, Punjabi have the same mentality. So they will intrude in Europe or America, will stay underground for years together and then they will get the citizenship. So these people, so that is called the Kabutar Bazi. So that is also the same combination 3, 4, 8. Right? People of developing or underdeveloped nation entering illegally into the developed nation. तो ये जो 7, 8, 12 में जो 7 है वो 7 क्या रिप्रेजेंट करता है? 7 is open enemy, 8 is insult, 12 is loss. So, but today I'll explain the murder. Why 7, 8 murder? I'll explain. After going underground is house arrest. So this house arrest combination. Yes sir. सर अंडरग्राउंड के लिए नंबर 3 चाहिए जरूरी है. अंडरग्राउंड के लिए हाँ हाउस से जरूरी है. हाँ वो घर से बाहर जाएगा ना. घर के अंदर तो वो अंडरग्राउंड हो नहीं सकता. घर के अंदर तो तहखाना हो नहीं सकता. वो तो पुलिस ढूंढ लेगी. वो तो और आप जो बोल रहे थे कि फैमिली को पता होगा वो कैसे मालूम पड़ेगा किस हाउस से? फैमिली डिस्ट्रेस में नहीं है ना. 2 नहीं है ना. फैमिली 2 के साथ 8, 12 नहीं है तो फैमिली प्रॉब्लम में नहीं है. फैमिली तो खुश है कि भाग गया. ओके ठीक है. अब हाउस अरेस्ट एंड पॉलिटिकल कन्फाइनमेंट.
These are the two combination which do not apply to a common man, which does not apply to aap. This applies to so many people, but do not apply to aap. This apply to political people only, or people like social workers or writers who have become famous. So if they write some novel or something, or they revolt, it can create revolution. So fearing that, the administration do not allow them to come out from the house. So they are arrested there only. So they do not allow him to go out from the house. They provide him everything there, but do not allow them. Political confinement is 2-3-12. So here there will be no planet. It can be benefics also. Benefic can also give political confinement. Rahu Ketu session is not required. So political confinement is 2-3-12. For confinement or jail to common man is 2-3-8-12. Because 8 is insult. Here 8 insult is not there. So why there is no insult? A political person, why he will not have any insult? Because he doesn't have any. तो मतलब तब होगा इंसल्ट तो तब होगा ना अगर जब उसकी इज्जत हो। हाँ मतलब जैसे तो रिस्पेक्ट ही नहीं है तो बेइज्जती कैसे? So in case of political confinement, there is no loss of name, fame and position. Rather the name, fame increases. Rather the name, fame increases. So how a person becomes a big leader? When he creates such a drama that people gather together because of his drama, going to jail, things like that. उसके लिए बाकी लोग तो अंदर चले जाते हैं, वो बाहर आ जाता है. How Lalu became the chief minister of Bihar? He was the president of Bihar Students Union at the time of JP movement in 1975 to 1977. So following him, all the students of Bihar University went into jail. Everybody's career was destroyed, devastated, because they lost 2 to 3 years in the university, so they finally couldn't do the graduation or post graduation, whatever. Nor they will get this, nor they will get the jobs, because they'll be considered as anarchists. But the biggest anarchist get the chief ministership. Same is with Arvind Kejriwal. Same is with George Fernandes. George Fernandes in 1974 उसने क्या किया था सर? सबसे बड़ा रेलवे का बंद करा. 74 रेलवे बंद, 77 रेलवे मिनिस्टर. सेम इज सुभाष चंद्र बोस. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. खून निकल जाएगा, आजादी मिल जाएगी तुम्हें, तुम तो जाओ. और गांधी became the राष्ट्रपिता, और he became father of nation. तो तुम्हें कोई यहाँ थप्पड़ मारे, तुम यहाँ थप्पड़ खाओ. गांधी को थप्पड़ खाया, गांधी तूने तो थप्पड़ नहीं खाया, तो बाकी में थप्पड़ खाया, गोली खाया, मर गए सारे. The people who are martyred, उनका नाम जो है नोट पे नहीं होता, ना फोटो होती है. जो और लोगों को मरवा देते हैं, वो फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ हिज फादर ऑफ, अंकल ऑफ, आंटी ऑफ, चाचा नेहरू, ऐसे बनते. पप्पू भी बनते, सब बनते. So 2-3-8-12 is political confinement, 4-8-12 is house arrest. So the combination of jail is 2-3-8-12 Rahu Ketu. Abduction is 2-3-4-8-12 Rahu Ketu. 2-4-11 the child comes back. 7-8-12 he will be murdered. 3-4-8-12 is going underground. Normally he is a criminal. 4-8-12 he may not be a criminal or person of criminal tendency, but he is a person already having a big social status, so people may get agitated. A number of people may get agitated. So he is given the house arrest.
political confinement is obviously because of the political people, right? So these are the combination related to captivity. ठीक है? So अभी मैं horoscope देख लेते हैं. Horoscope we had already seen. 2 horoscopes we have already seen, which were related to court cases. So in those horoscopes, let us try to find out who will get the jail and who will not get the jail, right? So now you can see this horoscope. Does this horoscope signify litigation? Yes. Mars, Rahu, Saturn, Mercury. I repeat, litigation is shown by Mars, Rahu, Saturn, Mercury, Venus. But none of the planets signifies 2, 3, 8. ठीक है? So he may lose the litigation, but he won't be imprisonment. He won't be imprisoned. Now coming on to the other horoscope. Which are the planets which show 2, 3, 8, 12? Rahu 2, 3, 8, 12. Jupiter 2, 3, 8, 12. Saturn 2, 3, 8, 12. Mercury, Moon 2, 3, 8, 12. Moon also 2, 3, 8, 12. मरकरी में तो बहुत ज्यादा पूरा ही सबलॉर्ड है. Mercury, 2, 3, 8, 12. you see, Rahu, Jupiter, Saturn, Mercury. These are all similar, sort of. Yes. Out of them, Saturn is the best because Saturn is signifying 10, 11 also. When you see Mercury, Jupiter, and Rahu, that 11 is weekend out. Yeah. 11 is weekend out. 10 is friend of 11. So 2 friends are there, at least they will be 1 and 1 11. एक और एक 11 चल मेरे यार. दूसरा मून जो है, मून is also 2, 3, 8. So in the dasha of say Mercury Rahu, there is all the possibility of imprisonment, right? Similarly, Ketu, Jupiter and Rahu, Jupiter and Rahu. So there will be imprisonment. So when Venus dasha starts, the problem is all over. Now let us take another example. This is today's example, right? Today's example is young boy. Oh, sorry, I don't have the detail, but I have the chart. I will not be able to show. Let me show you another example. This is also a very good example. 26th of January, 55, 00, 51, sorry, 54, Darjeeling. Now you can see which are the planets which signify 2, 3, 8, 12. Ketu, Sun, Rahu, 2, 3, 8. Saturn, Mercury. ठीक है ना? When majority is there, then it will be a big. It will not be an arrest of 1 or 2 days. Say for example, Jupiter and Jupiter Ketu. मरकरी में Mercury में 2 नहीं है? ठीक है, Mercury में 2 नहीं है, but 3, 4, 8, 12 is there. That means in Mercury he will go underground. He will go underground. Others are having 2, 3, 8, 12 also, 2, 3, 4, 8, 12 also. Kidnapping also, this also, 3, 4, 8, 12. मतलब he will be doing so many things. कभी भाग जाएगा, पुलिस पीछे भाग रही है. So he'll go underground for days or months, and finally he will surrender. Things like that. यहाँ से हम criminal हो सकता है because Criminal हो सकता है. For that we'll have to see the nature of the person, which I have already told you. I can just repeat if you say. So first we have to see the ascendant. The first point is ascendant. Ascendant is Libra. So we have to see the Lord of the ascendant and
planets in the ascendant. So planet in the ascendant are Mars and Saturn. So Mars is signifying depression. Depression combination is, sir, 2168. Now you have to remember this. 2168. Saturn is 7812 and 2168. You see, Saturn is 2168 and 7812. So 2168 is depression and 7812 is aggression. So this person is a confused person having mood swings. Having mood swings. So he'll be agitated. Mind is agitated because first house is the brain. This first step is we have to see the ascendant. Ascendant is Libra. Libra is such a ascendant. The person loses the balance on the mind the fastest of all the other 12, all of the other 11 signs, from Aries till Capricorn and then Aries till Pisces. So Libra, if the planet posited in the ascendant or Venus are signifying depression, aggression, that means he will be having mood swings, bipolar, sometimes depressed, sometimes is aggressive. And 7, 8, 12 is there, 7, 8, 12 is aggression. Because 7, 8, 12 is a combination which signifies poverty, rape, prostitution, right? So this person can kill because the brain is signifying aggression. So he is having criminal tendencies. Let us see all the planets. Which are the planets which signify depression and aggression? In such conditions, only the person can do criminal activity. Especially in 7, 8, 12. In 2168, he will think of committing a suicide, not killing someone else. So 7, 8, 12 is signified in Ketu, Sun, Rahu, 7, 8, 12, Rahu, Saturn, 7, 8, 12, Mercury, 8, 12. Others are signifying, these are also signifying 2168. Mars is also signifying 2168. Mars is signifying 788. So if 788 is there, it is not 712, but aggression is still there. So if, and Mars, it is Mars. So in Dasha Bhukti Antar of such planet, which planet like Saturn Dasha, Rahu Bhukti, Jupiter Dasha, Saturn Bhukti, Jupiter Dasha, Ketu Bhukti. So he will remain agitated. He can kill any time. And most of the planets are like showing aggression अगर तो उसका होएगा मतलब criminal tendency हो जाएगी. तो कत्ल कर सकता है, गोली मार सकता है, लगेगी नहीं लगेगी वो अगले के ऊपर डिपेंड करता है, ये तो मारेगा. सर ascendant भी देखते हैं, उसका लॉर्ड को भी देखा जाता है. Ascendant planet अंदर बैठा. Ascendant, Lord of Ascendant, planet in Ascendant. This is point number 1. These are point number 2. Point number 3 is all planets. Then, which will be the topmost time when such a combination appears or such an event happens? So all Dasha Bhukti Antar should complement the same combination. If it is marriage, then it is 27. Depression, it is 2168. It is aggression, it is 7. Aggression may not always mean doing murder. It can be a scuffle also. मारपीट भी हो सकती है. मर्डर का बाद में बता दूंगा, अभी कत्ल करवा देंगे, लेकिन अभी वो स्कफल है. सर एक क्वेश्चन है. Yes sir, please go on with the question. For murder, all DBA should imply that, मतलब मर्डर अभी कराया नहीं सर, मैं मर्डर कराया नहीं कराया तो फिर आप पूछिए. सर litigation and jail, all DBA को सब कुछ I mean for litigation and jail also सारे के सारे DBA planets को imply करना है. हाँ सर. Yes sir. And if Dasha does, then it will be in imprisonment for years together. If Dasha is slight, then it can be for 1 or 2 days, or the person is called in the police station and asked to stay in the police station for 5 to 6 hours. Sometimes it is small type of imprisonment, or you can say captivity, like if you are drinking and driving, means you are very spiritual in night and you are driving and police catches you, then you will go to the court. The
normally in Chandigarh, etc., then the judge give you an imprisonment for hours only. So he will tell to stand behind for 2 hours and then go, or stand till 5 o'clock in the evening, then go. So even such type of things are also done. So in such a thing, dasha may not signify. If bhukti antar signify imprisonment, then it can be for a day, may not be for a night, something like that. Okay? So if it is for years, only then dasha is years, months. If it is for years, dasha, then even the bhukti and The antardasha may second not. part of it No, is no, that bhukti if antar dasha bhukti implies, But today they may be significant, tomorrow they may not be significant. Still, dasha operates. then he'll be, means dasha will be mixed. Leaving the jail also mean 10, 11. नहीं दशा में आ गया कि जेल दशा में आ गया ना सर, दशा में आ गया, आज अंतरदशा में कल नहीं 19, तो फिर it will be sir 2 years jail or 1 year jail or 3 years jail. But if antaras are continuing, signifying 7, 8, 9 years, so it can be 7 years, 8 years, 9 years. बना रहना चाहिए. When जब बनाना खत्म हो जाएगा छोड़ दे. अब suppose the imprisonment is given for 5 years, but bhukti ends after 3 years, there is all the possibility that because of good you can say behavior, then So practically Sanjay Dutt but Sanjay Dutt is freelance he is freelance. सर वो अब क्या है, वो पॉलिटिकल गेम है, मालूम नहीं क्या है, but he'll have to remain for that many number of years or days. Well, that is there. It is possible that after 3 months, 4 months, parole is given. So parole is normally given to common man also. See, if there is any marriage at your house, or there is some other problem is there, death or etc. So parole is given. तो है तो होता ही. question is that कि अगर अंतर सिर्फ अंतर में प्रॉब्लम है, I'm sorry, अंतर में प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम, there is no problem. भुक्ति में अंतरा भी should be Rahu and Ketu, only Rahu or maybe English वाला or maybe Hindi वाला or, then only there will be imprisonment. If Jupiter and Moon is there, Jupiter, Venus, Jupiter, Sun, then 2, 3, 8, 12 doesn't signify any litigation. दशा भुक्ति अच्छा है, अंतर खराब है, in that I mean दशा भुक्ति. Nothing. Oh sir, your wife will not let you go. सर अगर दशा भुक्ति अच्छा नहीं है, मतलब उसमें प्रॉब्लम है, और अंतर अच्छा है, तो अंतर क्या प्रोटेक्ट कर पाएगा या फिर भी हो जाएगा? No, then you will have to wait for another antar. For imprisonment is a big thing, Devanjan. It's a big thing, you know. See, Delhi is having around 2 crore of the population, and the jail is say 10 to 15,000 people only. So going to jail is a big thing. It's a big thing. Means वो बड़ा मुश्किल है यार, वो दशा भुक्ति अंतर और थ्री शुड सर, इवन उसके लिए भी बहुत बड़ी बात है. मैं अपने बताता हूँ, माय शर्मा जी वर्क्स विद मी, ही broke the bone of someone, so the maximum imprisonment is of 7 years. So he lost the case. The judge said that you lost the case, so you are told to give 10,000 to him and 10,000 you have to submit in the submit as the jurmana in the court. So the he is asked to give just 20,000 and let go. He is not an habitual offender. So just say you are not a habitual offender and you are the only person who is the sole bread earner of the family, so you can go. He is not means the person is a 46, 7 years old. So now he has broken the bone of someone. वो bone भी जुड़ गई, वो छोड़ दिया, कोई बात नहीं है. अगर अगली बार करेगा तो चाहे और 1 साल और कुछ किया तो पकड़ लेंगे, वो छोड़ देते. उनका भी है कि गवर्नमेंट को भी देखना है, वो जेल में बंद करके फ्री की रोटी क्यों खिलाएंगे, वो पागल है. वो भी देखना ना, अगर हैबिचुअल ऑफेंडर है तो कुछ नहीं. हमने ही देखा वहां पर कोर्ट में कि वो मशीन में हाथ आ गया, मशीन में हाथ टूट गया, उसने कहा 50,000 रुपये मिल गया तुझे, बोल ठीक है चल यार, 50,000
जुर्माना। वो जेल होना बहुत बड़ी बात है। वो ऐसे ही है, चोरी है, स्नैचिंग है, डकैती है, रेप है, ऐसे में करके होती है, ऐसे नहीं नॉट इजी, बड़ा मुश्किल और बहुत क्लियर होगा तब वो, ठीक है। अभी मेजोरिटी प्लैनेट में जैसे ये दिखा, ये दो जो मैंने शोड यू टू एग्जांपल्स, लास्ट वाला आल्सो और उससे पहले वाला भी, सो 2 3 8 1 is repeated in 4 5 6 planets only, then it will happen. If it is in 1 or 2 planet, you have seen चमेली की शादी, ठीक है ना, देखिएगा, नहीं देखी चमेली की शादी, you have to see these movies, चमेली की शादी। सर जी, हाँ जी सर जी एक एग्जांपल लेके बताओ ना दशा भुक्ति अंतर का। प्यार का पंचनामा, सर आप मूवीज का नाम पहले नोट करो। प्यार का पंचनामा एंड गाइड। So these three movies are important to understand नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। तो चमेली की शादी में जो मदर आती है वो बेटी को जो है वो बंद कर देती है, वो तो अनिल कपूर के पास नहीं जाएगी। तो वो 2 3 8 12 है, वो भी एक तरीके से वो माँ ने जब माँ तो उसको खिलाएगी पिलाएगी, बड़ा ध्यान रखेगी, तो वो बेनिफिट्स में 2 3 8 12 समझिए मेरी बात। जैसे उसी में ही अगर हम बात करें कि जैसे वो भाग भी जाती है तो गायब होगी, तो वहां पे 2 नहीं है क्योंकि फैमिली को नहीं पता, फैमिली डिस्ट्रेस में है, लेकिन एक तरीके से अंडरग्राउंड चली गई मतलब सब आप वो तो फिर 3 4 8 12 ना अपनी लेकिन मर्जी से भागी है। लेकिन तो वो 2 उसमें नहीं आ रहा, 2 तो फैमिली में सर डिस्ट्रेस 3 में 4 है। 8 12 जो है वो अपनी मर्जी से भागी है, ठीक है, वो अंडरग्राउंड हो गया ठीक है, है। तो उसमें लव अफेयर भी तो आएगा ना 5 8 12, वो तो गेम बदल गई ना यार। हाँ, ठीक है, इन 2 का नहीं था इसलिए मैं पूछ रहा था। 2 तो नहीं सर वो जो 3 4 8 वाला वो क्रिमिनल है, लड़के के साथ भागी है, वो क्रिमिनल टेंडेंसी नहीं है ना, किसी को पीट के थोड़ा ना भागे यार, ठीक है। ठीक है। ये है ना सर, ये देखिए ना सर, इसमें जैसे Saturn Ketu is there, right? Saturn is signifying 2 3 12, Ketu is signifying 2 3 8 12, and Sun and Rahu are signifying. So in such a case the person will get the imprisonment. देखिए ज्यादा साहब, शरद साहब, ऐसे में मिलेगा, ऐसे भी मिल सकता है, जुपिटर केतु सैचन, ऐसे भी मिल सकता है, तो ये दशा भुक्ति अंतर। सर हाँ जी जी सर, इसका बेल भी तो हो जाएगा ना, वो अलग बात है ना सर, बाद में बेल हो। सर 6 सर 11 बहुत सारा कॉम्बिनेशन है। सर कौन पूछ रहे हैं, शरद जी आप पूछ रहे हैं बेल का या देवंजन जी आप पूछ रहे हैं? नहीं सर मैं पूछ रहा था हम। अच्छा अनवेंदु जी, सर वो जो बेल है ना सर, वो इसमें ना सर आप थोड़ा इसमें आपको वो लगाना पड़ेगा, क्या नाम है, कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। इफ इट इज अ मर्डर केस, so you will get the bail after few months only. Once the charge sheet is filed, before charge sheet is filed, you will not get it. And if you are not having 10 11, even after charge sheet, you will not get the bail. ठीक है? In case of small things, you will get the bail immediately. So it is like this. Rape is there, still charge sheet is filed, you will not get. Once the charge sheet is filed, you will get. Why till charge sheet it is not given? So you may hamper the proceedings of the investigation. So it is like this. सर वो सजा भी कम हो जाती है मैं बोलूँ। हाँ वो देखेंगे, वो बात पे तो चमेली की शादी देखना, प्यार का पंचनामा और गाइड। अच्छा अब इसके बाद है क्वेश्चन है मर्डर, कॉम्बिनेशन ऑफ मर्डर। सर जी आपने तो मेरा जवाब दिया ही नहीं। क्या सर? वही दशा अगर दिखा रही है केतु और भुक्ति पॉजिटिव प्लैनेट दिखा रही है और अंतरा नेगेटिव प्लैनेट दिखा रही है, तो फिर होगा क्या? फिर क्या सर? फिर होगा नहीं सर, फिर नहीं होगा ना सर, दशा इज नेगेटिव। नहीं दशा इज पॉजिटिव, दशा इज पॉजिटिव फॉर जेल, अंतरा इज पॉजिटिव, दशा इज पॉजिटिव फॉर जेल, हाँ but bhukti is not positive. Bhukti is not positive for jail. Go to the next bhukti, do not see the antara. Antara will not be able to do anything. Clear? Okay. Thank you. अच्छा सर क्वेश्चन पूछ लिया करो if I have not answered. So for a murderer, we have to see the same way, nature. But there are certain more things I have to tell. The same way. First is we have to check this ability.
The first point is we have to check the ascendant. Second is Lord of ascendant, planets in ascendant. And we have to check it should signify 7, 8. Now, first and the foremost thing I have written is ascendant. What do you have to see in the ascendant? Which is the ascendant? So normally the watery ascendant are the ascendant which are least probable to kill others. Least possible. Because they are sentimental. Fiery Libra and Aries, other Aries. So their possibility is maximum. The ascendant which are fiery, 1, 5 and 9. And out of that, Aries is the topmost. Then Libra is also there. The airy ones. So they can kill. Gemini will be a clever person. He may not kill directly, but he may poison anybody and then run away because he is dual character. Right? But the Cancer, Scorpion, Pisces are the least. I am not saying they cannot do. But they also will do only when the Lord of Ascendant or planet in the Ascendant signifies 7, 8. Any one of them. Third is majority planets should signify 7, 8. Fourth, DPA 7, 8. 5. D of Mars 7, 8. DB Dasha of Bhakti of 8th Lord planet. Dasha or Bhakti of 8th Lord, Lord of 8th house. 8th Lord means Lord of the 8th house. Or planets in the 8th. This is the murderer. Right? So there are other type of murderers which are also called dacoits and terrorists. So terrorists will be having additional features. Terrorists, dacoit and terrorists will have additional features. What are the additional features? Mars and Pluto in the ascendant or third house. Like this. Mars and Pluto. Yes. Mars, Pluto. Or like this. Mars, Pluto. Signifying 6, 8, 12, 7, 8. ऐसा कुछ बताएगा 6, 8, 12 साल. Dacoit is having additional feature to this. Dacoit is having additional feature to this. और एक और एडिशनल फीचर होगा डेकॉइट में, वो होगा जिद्दपन. क्या होगा उसको? अंग्रेजी में क्या कहेंगे? स्टबन. ठीक है ना? स्टबन. Or you can say determination. So when stubbornness, the combination with 7, 8, it is stubborn. When it is with positive houses, then it is not stubborn. Then it is Goodwill power, determination. So ये बॉम्बे गया तो फिर पाकर वाली है स्पेशल. फिर 5, 10 मार्स और उसके साथ है क्या लगेगा? ऐसा मार्स से प्लूटो को किया था 6 and 12. हाँ. That was for a terrorist, right? हाँ. Stubborn हम कर रहे हैं डेकॉइट के लिए 5, 10. Sir, ये dacoit and terrorist will also have the combination of stubbornness. अच्छा तो ये 5, 10 के साथ ही मार्स प्लूटो देखना है ओनली 5, 10? मार्स प्लूटो के साथ तो 6, 8, 12 साधारण. अगर 5, 10 है और अच्छी बात, डिटर्मिनेशन बढ़ेगी ना. Patriotism is 4 and 9. So if I add all this with 4, 9,
then the person becomes martyr. So there can be three classifications of a murderer. One, he is a martyr, another is a terrorist, another is a simple murderer. Simple murderer is the... सर लास्ट वाला पोर्शन दिख नहीं रहा है. सर अभी मैं बता रहा हूँ सर, अभी बता रहा हूँ सर, अभी बता रहा हूँ. लास्ट ये martyr लिखा है सर मैंने. This is murderer only. So in case of dacoit, I have to add these two combinations. Which two combinations? With this I have to add these two combinations. Mars Pluto in the ascendant or in the third house, and signifying 6, 8, 12, 7, 8, 12. If Mars Pluto both do not signify 6, 8, 12, 7, 8, 12, then it doesn't apply that is a dacoit or a terrorist. The dacoit and terrorist kill a number of people at one time. So for mass killings, Pluto comes. Mass killings, Pluto comes. Now if you have to see the martyr, then you have to add 4, 9 also. Then the mass killings are because of the love to the motherland. Then the meaning changes. Then the mass killings is for the love to the motherland. For an example, the murder of General Dyer. So Udham Singh killed him in London. In London, he went from India to kill him in London, but he killed only him. He doesn't kill any innocent person. So in case of dacoit and terrorist, he kills innocent people, not for the patriotism. He kills just because he wants to kill. That's all. There is no objective. The objective is just for the terrorism. टेरर फैलाना. तो इसको हॉरोस्कोप दिखाते हैं आपको. So this combination of martyr can come in the horoscope of some army person. Yeah, it can. सम नहीं, वो सभी होते हैं. उसमें सभी कि जो भी ये होते हैं ना, क्या नाम है, लेफ्टिनेंट बनाए थे ना, जैसे सबसे पहले कश्मीर में भेजते हैं या नॉर्थ ईस्ट में भेजते हैं, पहले ही लड़ा देते हैं. उसके बाद फिर उसको 2-3 साल बाद रेस्ट देते हैं. उसका यह आता है कि उस समय खून गर्म होता है ना, तो बोलते हैं चल बेटा गर्म है तो बढ़ जा. ये अपने पास नहीं रखनी थी सर. ये नहीं, मैं भी तो हूँ. नहीं बढ़िया सर, ले ले. चलिए, डिफरेंट आता है. पता नहीं पसंद आया नहीं आया. बोलो सर. Now this is the combination. See, first we'll see the murder. Okay. So for murder we have to see first the ascendant. Ascendant क्या है? Gemini. Okay. सारे Gemini will not be the murderers. All Gemini will not be murderers. So first we have to see the Mercury. The Lord of Gemini signifies 7, 8, 12, and planet in the ascendant is Mars. Mars signifies 7. सर समझ आई बात? लॉर्ड ऑफ मर्करी जेमिनी क्या है? लॉर्ड ऑफ जेमिनी मर्करी. मर्करी में सर 7, 8, 12 7, 8, 12 नहीं है. 7, 8, 11 नहीं है. ऊपर है 12. वो लेना पड़ेगा. हमारे ये 3 होते हैं सर. हम तीनों लेते हैं. आप सीधी समझो. 7, 8, 12 है. ठीक है. Then we have to see which is the planet in the ascendant. Planet in the ascendant is Mars. Mars is signifying 7, 8, 12. 7, 8, 12. Majority planet 7, 8, 12. Right? Mars 7, 8, 12
Rahu 7/12, Jupiter 7/12, Saturn 7/12, Mercury 7/12. Right? Then Dasha Bhukti under 7/12. So he'll kill in either of these five. Either of these five combination he'll kill. Either the Dasha of Mars or the eighth lord is Saturn. So he killed Gandhi in Jupiter Saturn session. He killed Gandhi in Jupiter Saturn session. Jupiter is 7/12, Saturn is 7/12. So he is a murderer. Now we have to see whether it is a dacoit or a terrorist. So either the dacoit or a terrorist will kill an important person or he will kill a number of people. Mars and Pluto. So Mars or Pluto are in the ascendant or not? They are. They are in the ascendant. Mars is signifying 7/12, Pluto is signifying 6/12. Now, is he stubborn? 510. 510 Huh? 510 is there. 510 is there, but it is there or not? Yeah, Mars. Jupiter, Saturn. Here no, we have to see here. Jupiter, Saturn दोनों में. Let us see how many planets. जुपिटर में है 6 510 सैटर्न में भी है 4 5 6 6 में 6 planets are signifying 510. Yes, sir. Now, is he a patriot? Sure. Now you have to count the number of 4 and 9. It is not a combination. It is और 4 or English में चलेगा, हिंदी में चलेगा. अच्छा So how many 4 and 9 are there? 4 केतु में है आगे 4 है 4 9. 3. Venus सब में है other than Venus छोड़ के सब में है ना है वो 4 9 बहुत बार repeated है. That means he is a martyr. He has killed Gandhi for Yes. love of the country. So he want to give his life for the country. What state says is a separate issue altogether. Yeah. State will say as it suits to the state. इसके मन के बात This is how what he thought. What he is, what state says separate issue. Udham Singh was adjudged as the terrorist, That is why. but he is martyr. Same is Chandrasekhar Azad, same is Bhagat Singh, same is Ashfaq Ullah Khan. which side you are sitting on. It is depends on, right? So if we would have been under the English rule, again our books would have been teaching us the same thing. Nehru, good person, Bhagat Singh, terrorist. Chandrasekhar Azad is terrorist. So they will teach you Udham Singh is a terrorist. Vinayak Damodar Savarkar is a terrorist. Now, as are we being taught that Nathuram Godse was a terrorist. So we will be taught like that. But ask those Tamils who were killed by Sri Lankans. So those Tamils who gave their life, if Tamil state would have come up, then those will be adjudged as the as martyrs, not terrorists. But for sure, the people who kill innocents are terrorists. ठीक है ना, वो जो 26/11 में जो हुआ, that is terrorist activity. Because जो तुम hospital में you are killing people in hospital, you are killing people in platforms, railway platform, on the streets. That is an act of terrorism, for sure. But you are killing a person, especially that person, like General Dyer, that is not the act of terrorism, that is act of patriotism. ठीक है? इसके बाद है the reason of litigation. Reasons of litigation.
सर जी उसमें का मेरा 5th पॉइंट लिखने का बाकी रह गया, कौन सा लास्ट वाला। सर 4 and 9 जो था, 4 and 9। नो नो ना, यहाँ का असेंडेंट वाला। अच्छा, जो 5th पॉइंट था वो था दशा ऑफ मार्स हाँ, और दशा और भुक्ति ऑफ 8th लॉर्ड और प्लेनेट इन 8। लेकिन ये सबको 7 8 12 बताना है। 7 8 12 नहीं बताता तो बेकार। यानी 8th में बैठा है और 5 11 बता रहा तो नहीं मटर करेगा ना। अच्छा सर, ये अभी जो हमने चार्ट देखा सर, इसमें सर जैसे मास इंटू था असल में, लेकिन इन्होंने तो सिर्फ एक ही को। सर वो इतना बड़ा मार दिया ना। अच्छा, हाँ, या तो कोई ऐसा बड़ा आदमी मार जाए, क्लेश हो जाए, या फिर बहुतों की लाइफ को इफेक्ट मतलब। हाँ, वो मतलब है। प्लूटो का मतलब है, प्लूटो जो होता है वो वुडन प्लेनेट है, मतलब वो बड़ा असर करता है। ये नहीं कि बड़े सारों को मारना, बड़ा असर करता है। इफेक्ट ज्यादा, इफेक्ट उसका ऐसा है। सोल्जर मारना इज नॉट, जनरल मार दिया तो बड़ी बात हुई, ठीक है ना। अब मोदी मार दी बड़ी बात, इंदिरा गांधी मारना बड़ी बात है, राजीव गांधी मारना बड़ी बात है। आम आदमी तो रोज मरता रहता है। अरविंद केजरीवाल अगर मेट्रो में जा रहा तो बहुत बड़ी बात है, आम आदमी तो रोज जा रहा, ठीक है ना। अरविंद केजरीवाल जा रहा तो बड़ी बात है, ये फर्क है। अरविंद केजरीवाल सड़क पे सो गया, पब्लिक सो रही थी सड़क पे, मर जाते लोग तो पूछता उसको रजाई भी मिलेगी, सब मिलेगा भाई। वो जो करुणानिधि है उसने वो भूख हड़ताल कर दी, तो उसको एसी उसी लगा दिया आसपास देखा ना, उसके आसपास एसी उसी लगा दी। खाता भी जाने हाँ वो ले जाइए खाना पीने सब। If 1 6 10 8 12 is there, the reason of litigation is marital problems. Theft, marital 7 12 plus beat and molestation rate, 7 12 plus murder, Mars stages 7 7 physical fight, forgery, embezzlement, theft. सब करप्शन रिश्वत लेते का सर मेरे को पता नहीं सर, थोड़ा सा नीचे कर लेना स्क्रीन। क्या सर? तो स्क्रीन थोड़ी नीचे कर लेना। ओके सर,
करप्शन का कुछ याद नहीं सर, कुछ सारा केस नहीं आया तो इसमें रहेंगे सर जो obviously ये कुछ एम्बेजलमेंट या फोर्जरी के जैसे में होगा, क्योंकि रिश्वत कोई इम्पोर्टेंट आदमी है, नहीं 10-11 तो उसके हॉरोस्कोप है ना सर, वो तो उस समय पे हुआ जब उसको जॉब मिली, जॉब मिलने के बाद जब उसका बुरा वक्त आएगा तब उसका 6 ठीक है ना। जो बड़े बड़े आईएएस अफसर है वो फिर जीरो हो जाते हैं, बड़े बड़े नेता हैं जीरो सड़क पे खड़े होते हैं, बड़े बड़े जो एक्टर हैं वो सड़क पे आए थे, वो तो बड़ा तो उस समय है जब दशाभुक्ति अंदर अच्छी। इंदिरा गांधी वेंट टू जेल में, Zulfikar Bhutto was hanged. What happened to Saddam Hussein? What happened to Colonel Gaddafi? He was found in a pipe, severe pipe. और वो what about Saddam Hussein? Where he was found? क्या जिंदगी बदलती है? It's only दशाभुक्ति। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। Just अभी जो देखो सोचो, just imagine ना, इसमें फूलन देवी was raped and it was a mass rape. So rape is there, then it is 7, 8, 12 plus Venus. When mass rape is there, then it is 7, 8, 12 plus Venus. Rape is 7, 8, 12 plus Rahu, Ketu and Venus. Mass rape is there, then you have to add Pluto. Then she became a dacoit. I told you the combination of dacoit. She killed people. But when her bad time came, she was murdered. So when longevity is ending, then your 7, 8, 12 is coming, then the mode of death is by murder. So 7, 8, 12 combination is one, but so many things will happen. So जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा और होगा. Indira Gandhi killed sadhus. Indira Gandhi killed political rivals. Indira Gandhi killed Muslims, and ultimately she was murdered. Gandhi killed, was instrumental in killing Hindus and Muslims. Ultimately, he was also assassinated. Rajiv Gandhi sent the peacekeeping force. You know, no? Peacekeeping force. What is peace? What is the spelling of peacekeeping force? Yes. It is peace. Peacekeeping force. We cut people in pieces, and then you keep them. It is peacekeeping. Cut the pieces. So Rajiv Gandhi you found was also found in pieces. Indira Gandhi was also found in pieces. Sanjay Gandhi killed Muslims in 1975, 76, 18th of April. He was also found in pieces. सर एक क्वेश्चन है जी बताएंगे सर, ये जो आपने मार्स सैटर्न के साथ 7, 8 और 7, 12 लिखा है ना फॉर फिजिकल फाइट, जी लिखा है। हाँ, तो सर उसका क्या मीनिंग है कि मार्स और सैटर्न में 7, 8 और 7, 12 होना चाहिए? यस मैडम, अलॉन्ग विद मार्स सैटर्न टुगेदर। मार्स सैटर्न दशाभुक्ति। अच्छा, या चार्ट में कंजंक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं है? नहीं, दशाभुक्ति उनकी चले। ओके। सर प्रॉपर्टी का? प्रॉपर्टी it is 4, 6, 8, 12 plus Mars Saturn plus Rahu. Litigation because of property, problem related to property. So this is means. सर मेरा एक क्वेश्चन है। Yeah, please. 7, 8, 12 प्लस वीनस जो आपने लिखा है वो मेल के इसमें रहेगा तो रेप के इसमें लिटिगेशन होगा, मगर वो लड़की के अगर पत्रिका में होगा तो अगर वो फीमेल के पत्रिका में 7, 8, 12 प्लस वीनस होगा तो वीनस ही होगा, दोनों में वीनस आएगा। चाहे जो मार रहा है और जो मर रहा है कॉम्बिनेशन 7, 8, 12 भी है, लेकिन जो पर्सन हु इज एग्रेसिव means the ascendant is signifying 7, 8, 12, he will kill. The person who is not having 7, 8, 12 in the ascendant, he will be killed. But the people who have aggressive minds, ultimately they will be surely killed. वो तो पक्का ही मरेगा ही मरेगा। जो डकैत है वो भी गोली से ही मरता है सर। चोर
चोर के घर भी चोरी होती है। जो आदमी करप्शन करते हैं ज्यादातर आप देखना कि उनके पैसे उनके साले खा जाते हैं। कोई प्रॉब्लम रहती है। पैसे साले खाते हैं, क्योंकि वो पैसा साले के घर जमा कराते हैं ना, ज्यादातर देखोगे वो साले का या फिर वो जेल में पकड़े जाते हैं। यही होता है सर ज्यादातर केस में। नहीं तो क्या होगा, आपने देखा होगा जैसे अजहरुद्दीन का केस है सर। अजहरुद्दीन ने मैच जीत जीत के पाकिस्तान को जिता जिता के शेखों से पैसे खाए थे। सर अब उसने उसको 25-50 हजार की मोटरसाइकिल ले दी, बच्चे का बच्चा मर गया, अब ले ले टट्टू, ले ले कमा ले बादशाह। ये मैं गलत काम, मैं तो देखा रहा सर, 50 साल उम्र होगी ऐसे ही पैसा निकल जाता है। अपन भी तो है कि सर या तो वो नैनो में चलते हैं या 8 करोड़ की मेट्रो में चलते सर। इसी काय बात की 50 लाख की मर्सिडीज खरीदनी है या 8 करोड़ की मेट्रो में जाएंगे ना, इजी है सर। यही होता है, मैं देखा जा रहा है यही है कलेश लोगों का यहाँ पर। पता है शशि का वो पता नहीं है सर यादव साहब, आपके महाराष्ट्र में क्या है, हमारे यहाँ तो दिल्ली में यह है कि जो जूनियर इंजीनियर है उसने घर के बाथरूम की टाइल्स पे सोने की नक्काशी करा रखी है जनाब। ऑल ओवर इंडिया नहीं मैं दिल्ली की बता सकता हूँ, दिल्ली का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका नाम यही है MCD, मुझे कमीशन दो। तो एक बार टैब खुल जाता है ना सर, तो आता ही रहता है। आपका नहीं पता सर, जो मेरे को पता नहीं है मैं जानता नहीं सर। DDA दिल्ली डिमोलिशिंग अथॉरिटी, दिल्ली डकैत एसोसिएशन। आप फंस गए वहां, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। वो आपको मकान नहीं देगा, मकान देगा कुंडी नहीं देगा, कुंडी देगा तो खिड़की नहीं देगा, खिड़की देगा, परेशान कर देता। और जो मिल गया वो कभी भी गिर सकता है। हाँ वो गिर सकता है, डिमोलिशिंग अथॉरिटी है, डेवलपमेंट नाम का कुछ चीज नहीं है सर। अजीब है मामला, तो ऐसा ही है सर, क्या कर सकते। थैंक यू सर। हाँ ठीक है। तो वही देखा सर, मोर यू आर स्पिरिचुअल मोर यू आर डाउन टू अर्थ। देख मालूम है ना सर वो कौन सा सर? मोर यू आर स्पिरिचुअल मोर यू आर डाउन टू अर्थ। सही बात है। कैसे सर? अभी आप भी स्पिरिचुअल है ना, तो डाउन टू अर्थ है। नहीं सर, वो क्या है कि चंडीगढ़ गया मैं ज्यादा साहब, तो चंडीगढ़ में व्हाट हैपेंड, आई means the class usually starts at 11 o'clock, so all the students didn't come because there is lot of fog there. So I told everybody to give an introduction दे देगा तो वो कुछ टाइम बीत जाएगा, इंट्रोडक्शन कराना तो है, तो इंट्रोडक्शन तो चालू करो फिर देखते हैं। तो एक लेडी को बोला मैं इंट्रोडक्शन दीजिए, वो 15 मिनट तो इंट्रोडक्शन में खा ली। बोलते मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं वो कार्ड करती हूँ टैरेट, क्योंकि उसमें मेरे को स्पिरिचुअलिटी नजर आती है, मैं वो रेकी करती हूँ वो स्पिरिचुअल है, वो ज्योतिष भी स्पिरिचुअलिटी के लिए कर रही हूँ, वो मैं कोई कौन सी हीलिंग पता नहीं थीटा वीटा हीलिंग स्पिरिचुअलिटी के लिए कर रही हूँ। मैं मंदिर नहीं जाती हूँ, लेकिन मंदिर जाने का मतलब ये नहीं है कि मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ। वो तो सर स्पिरिचुअल ऐसा हो गया दिमाग खराब हो गया। 15 मिनट हो गए, मैंने बोल लिया, मैं कहा मैडम आपको स्पिरिचुअल समझाता है क्या होता है स्पिरिचुअल। मैं क्या होता है, दिल्ली जब भी चंडीगढ़ आता हूँ मैं एक दिन पहले आता हूँ, क्योंकि तो दी Shatabdi reaches at 11 in Chandigarh, so class starts at 11. So if you come by Shatabdi, means you will have to get up early in the morning, and when you reach there at 11 and you reach at the class at 12, you are almost weird out, worn out. So you should have a fresh mind to teach, So normally I reach a day before, and I have a friend there, Anu Bhutani, so I teach in his place. Right? वो भी राजन जी के जगह पे पढ़ाया था ना अभी बॉम्बे में ज्यादा साल, तो ऐसे वो भूटानी जी हैं, उनके दोस्त हैं, तो उनके यहाँ पर पढ़ाता हूँ ऑफिस। तो मैं कहा फिर रात को जो है वो जो भूटानी जी हैं वो स्पिरिचुअल हो जाते हैं। मैं कहा आई एम नॉट दैट मच स्पिरिचुअल, बट भूटानी जी एंड आई वी बोथ गो टू, there is a hotel there, a good restaurant, a good hotel, Western Court in Chandigarh at the Panchkula. So we both sit in that hotel restaurant.
कौन सा सेक्टर है सर 43B जो है वो इसमें चंडीगढ़ में, तो उधर बैठ जाते हैं तो वहाँ लड़का गाना बहुत अच्छा सुनाता है। तो चंडीगढ़ में क्या होता है 10 बजे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, तो हम ही बैठे होते हैं 10 बजे के बाद, तो घंटा 1.5 घंटा फिर हम वो स्पिरिचुअल तो होते हैं तो गाना वाना चलता रहता है। तो स्पिरिचुअल होने के बाद गाना ज्यादा चलता है, आपको तो पता है। तो अब हम वहां से निकले तो भूटानी जी स्पिरिचुअल थे, तो मैंने देखा दूर वो पुलिस ने बैरिकेड लगा रखा था, तो मैंने देख लिया, तो मैंने कहा यू गेट डाउन, आई ड्राइव दी कार। तो मैं ड्राइव किया तो उनको समझ में आया, गाड़ी दूर रुकी है तो दे पीपल मस्ट बी स्पिरिचुअल। उन्होंने रोक लिया, मशीन लगाई, बोला इसको स्लो कर। तो उसने 3 बार ट्राई किया, तीनों बार उसके मशीन चली नहीं, तो उसने जाने दी। और भूटानी जी का कर लेता तो वो भूटानी जी को डाउन टू अर्थ कर देता। So more you are spiritual, more you, I was not spiritual, बट मैंने कहा मैडम अगर दिल्ली में है ना तो दिल्ली का जो पुलिस है वो डिफरेंट है। दिल्ली की पुलिस तो सामने शक्ल देख के बता आती है, हाँ भाई शिवाजरी का साइड पे है। दिल्ली में वो बैलून होता है, या वो ऐसे ही कहते हैं, ऐसे अगर तो वो सूंघ लेते हैं। तो दिल्ली में एक बार मशीन थी उसके पास, तो मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि मुझे क्या दिल्ली का आइडिया क्यों है, जिधर मेरी शॉप है यहाँ पर, कभी दिल्ली आएगा तो उसके साथ ही वो शराब का ठेका है। तो हम निकलते हैं तो होली, न्यू ईयर, ऐसे डेज के अंदर तो वो पुलिस वाले वो क्रॉसिंग पे खड़े होते हैं, तो जो भी कार आएगी उसको रोकते हैं, और बड़ी कार वाले को ज्यादा रोकते हैं। तो मेरे पास वो पुरानी वाली बड़ी कार है, तो रोक दिया, वो रोज ही रोक लेते हैं मुझे। तो मैंने एक दिन देखा दे हैड अ मशीन, अब वो मैंने फूंक मारी, वो मशीन चली नहीं। अब वो पुलिस वाला कंफ्यूज हो गया, मेरी शक्ल को देख के उसको पक्का था शिवाजरी का। बोलता शिवाजरी का, मैं कहा साहब शिवाजरी का नहीं। बोला नहीं शिवाजरी का, मैं कहा साहब शिवाजरी का। फिर उसने दिखाया तो मशीन चली नहीं। अब बोलता है तो मशीन चल नहीं रही, मैं कहा साहब मेरे को जाने दो। बोलता नहीं 2 मिनट ठहरो। वो पीछे ले गया बॉस के पास, मैं भी चला गया। बोलता साहब मशीन चल नहीं रही, उसका कॉन्फिडेंस देखो आप। तो फिर वो जो पीछे बॉस बैठा था उसने फूंक मारी, बोलता चल तो रही है। तो बॉस वाज वाज स्पिरिचुअल। और 2 टाइप की स्पिरिचुअल होता है सर। तो अभी मैं गया यहाँ पर वृंदावन में गया, तो वृंदावन में जैसे यू एंटर इन वृंदावन, तो एंटर करते ही वृंदावन में शॉप, सबसे पहली जो शॉप होती है वो होता है अंग्रेजी शराब देसी, अंग्रेजी शराब का ठेका, इंग्लिश लिकर शॉप। अब मैंने वाइफ से पूछा ये इंग्लिश का क्या मतलब है, आई डोंट नो। वो तो खरीद के देख लो। वहां से परचेज कर ली, आगे गए तो एक देसी शराब का भी था, एक वहां से वो भी ले ली। अब हम तो स्पिरिचुअल लोग, वहां पर वृंदावन में स्पिरिचुअलिटी के लिए गए थे, आप तो जानते हैं ज्यादा, मैं तो स्पिरिचुअल आदमी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये इंग्लिश शराब और ये देसी शराब की क्या चक्कर। तो वो पूछते पूछते वो एक कोई सरदार मिल गया, तो मैं कहा साहब ये अंग्रेजी शराब क्या है। बोलता मैं आपको बताता हूँ क्या है। उसने 2 पैक पिए, वो इंग्लिश बोलने लग गया। तो प्रूव हो गया ये इंग्लिश शराब। देसी पिलाई तो बंदा नीचे गिर गया, क्योंकि उसमें स्पिरिट ज्यादा होती है। सो क्लियर हो गया, मोर अ पर्सन इज स्पिरिचुअल, मोर इज डाउन टू अर्थ। ज्यादा साथ चले तो नहीं तो है सर जाने तो हम दोनों भी स्पिरिचुअल नहीं है फिर। हाँ सर, तो हम दोनों भी स्पिरिचुअल नहीं है फिर। अच्छा नहीं है स्पिरिचुअल, नहीं मैं तो स्पिरिचुअल आदमी हूँ सर। फिर मैं वो डेफिनेशन में नहीं आता हूँ। पुलिस नहीं पकड़ पाती, मैं क्या। अभी आज क्वेश्चन भी था सुबह क्लास के अंदर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, बोले कौन सा आदमी ज्यादा स्पिरिचुअल है, तो मैं आपको बताता हूँ स्पिरिचुअल पर्सन।
So, so either of Rahu, Ketu, Sachan. Rahu, Ketu, Sachan in second house, signifying 6 से 12. 6 से 12 जरूरी है सर. So it is bad food habits. It's not necessary a person is spiritual. He may be taking excessive tobacco. He may be taking drugs. Right? And the ascendant should have 2, 1, 6, 8, 7, 8, 12, something. So one is Rahu Ketu Sachin in second house. Second is he should be having depression, aggression, combination in ascendant. So some problem in the mind should also be there. Otherwise, why will a person will take excessive tobacco, liquor, etc. ऐसे तो लेगा नहीं. तो ये देखना है ज्यादा सा. I show you a horror scope. सर उसमें है ना जो एक्सेस वाले होते हैं. हाँ, एक्सेस का है ना सर. थोड़ा बहुत अगर सिगरेट शराब पीता है आदमी, मतलब आप, मैं 10 सिगरेट पी लेता हूँ 2 साल में, तो उसमें कोई बात नहीं है. वो तो हम 10 सिगरेट तो वैसे सड़क के ऊपर खड़े होते पी लेते हैं. अगर वो तो इतना स्मोक उठता है, वो तो कभी यारी दोस्ती में पी लिया, वो बात अलग है. दारू पी लिया, वो बुटानी है, उसके साथ दारू पीनी पड़ती है. तो वो एक वाइन का ग्लास ले लेते हैं, वो 5-6 दिन में पी लेते हैं. उतना तो दवाई में ही पी लेते हो आप. ठीक है, तो वो उतना ही है बस, और कुछ नहीं. सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है कि सिर्फ असेंडेंट 2, 1, 6, 8, 7, 8, 12 है, या उसमें जो कुछ भी प्लैनेट रहेंगे उसमें भी 2, 1, 6, 8, 7, 8, 12 है? वही मैंने समझाने के लिए सर अभी आपको हॉरोस्कोप लगा रहा हूँ. हाँ, ओके. मैं कर रहा था, मुझे मालूम था आप ये क्वेश्चन पूछेंगे सर, तो मैं आपको बता. तो इसमें सर वो नेचर देखने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, ज्यादा सा वी हैव टू सी ascendant lord and planet in the ascendant. That is important. So when I writing the second point, depression, aggression combination in the ascendant, what I mean, we have to see first the ascendant. तो ascendant क्या है सर इसका? Venus. Taurus. Yeah. Lord is Venus. Venus is signifying 2, 1, 6, 8. Right, sir? Moon is signifying 2, 1, 6, 8, 7, 8, 12. The moon is in the ascendant and having bad combination, the person is sentimental also, and depression also. And Ketu is in the second house, so this person is having, Ketu is having 6, 12. No 5 and 11 is there. That means whenever the person will be highly aggressive or he'll be in depression, he will resort to bad food habits. So either he will become a drunkard or he will resort to excessive smoking. Now you see majority of planets are having 2, 1, 6, 8. You see Venus, Moon, Rahu, Jupiter, Mercury. So tendency is depression, right? So in these dasha bhukti antar, he will resort to more. Okay? So he is one of my students. He has already committed suicide. तो राजा साहब इसके घर गया मैं एक बार, तो इनकी वाइफ बोले आज गुरुजी आए हैं, तो आज गुरुजी इनको बोलो कि आज से सिगरेट को हाथ में लगाएं. उसके पहले का सर एक सेंटेंस रह गया. क्या सर? आपने किसी से बाहर पूछा कि ये स्टूडेंट का घर कहाँ पे है? हाँ, तो अच्छा यहाँ से ये धुआं निकलता है. हाँ, वो इन्होंने नहीं सुन रखा, सॉरी, माफी चाहता हूँ. ओके. वो क्या है, उसका घर ढूंढ रहे थे, तो घर के बाहर धुआं निकलता है. बोले जो घर के बाहर धुआं निकलता है वो अजय बंसल जी का घर है. तो अजय बंसल जी के घर धुआं निकलता रहता है, इतना सिगरेट पीते. तो अंदर गए, बैठे, शॉर्ट में बता रहा हूँ ना सर. तो बैठे, तो उनकी वाइफ ने बोला जी आज भी गुरुजी आए हैं, तो आज गुरुजी कसम दिलाओ कि आज से सिगरेट नहीं पिए. तो मैं कहा, बंसल जी बोला कि भाई मतलब गुरुजी आप एक बार कह दो कि मैं जिंदगी में सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा. तो मैंने कहा यार मैं तो तेरे को इतनी देर से कह रहा हूँ, तब तक तू 2 डब्बी सिगरेट पी गया. ठीक है. तो बोला बस ये आखिरी है, आपकी जिंदगी में नहीं पीऊंगा.
उसके 3 दिन बाद उसकी वाइफ का फोन आया, बोलता गुरुजी ये मेरे जान पे क्या आफत डाल गए। मैं कहता हूँ सिगरेट पीनी बंद नहीं की। बोलता नहीं सिगरेट पीनी तो बंद कर दी है, बीड़ी पीनी शुरू कर दी। उसके लिए मना थोड़ी किया था। हाँ, सिगरेट को मना किया। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। उसके बाद सिगरेट नहीं बंद करवाई मैंने, वो बीड़ी नहीं बंद करवाई, क्योंकि पहले मैंने उसकी शराब बंद कराई थी। तो फिर मैंने कहा जाने दो, वो बीड़ी पी पी के ही मर गया। मतलब ये बहुत बुरी जिंदगी रही इनकी। मतलब मेरे को कहते थे अब इसमें ना 5911 सर देखे बहुत है। अब देखो 5911 होने से कुछ नहीं होता सर। अगर आप अपनी बॉडी को अब्यूज ही करना है तो आपने फिर कुछ नहीं कोई कर सकता सर। अब ये नहीं है कि आप ये बोलो कि जी सर 5911 है, ये मेरे को बार बार कहता था 5911। मैं कहा 5911 का मतलब ये है कि आप अगर अपनी बॉडी को ठीक रखना चाहते हो तो प्लैनेट्स आपको हेल्प करने को तैयार है। आप का एक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन नहीं है और आप बोले मैं ट्रक के आगे खड़ा हूंगा, ठीक है, और ट्रक मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा, आप हवाई जहाज के नीचे खड़े हो जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्रक थोड़ा छोड़ेगा। कुछ तो यार मुझे विल पावर वाली बात भी होती है, तो बेवकूफों वाली बात थोड़ी करनी। तो एक तो जादव जी है, एक साथ में और इसके साथ एक और कॉम्बिनेशन बताना मुझे, फिर बात हो ही रही है। तो एक है स्पेंड थ्रिफ्ट, नीचे लिख देता स्पेंड थ्रिफ्ट, और एक है माइजर। Oblique Mercury. In the ascendant is Miser. Mars, oblique Jupiter. In ascendant is Spendthrift. 6 से 12 होना चाहिए, 6 से 12 नहीं है तो फिर नहीं। मार्च क्लियरली और एक बार रिपीट कीजिए प्लीज सर। स्पेंडथ्रिफ्ट जो बहुत पैसा खर्चा करता है आदमी औकात से अधिक, तो मार्स या जुपिटर ascendant में signifying 6 से 12, that person will be spendthrift. A person will be miser if Saturn or Mercury signifying 6 से 12 will be in the ascendant, then the person will be a miser. And if both are there, like Saturn is also there and Mars is also there, then the person will be penny wise, pound foolish. जनानी वो 5-5 रुपए के लिए तो आम वाले से लड़ रही होगी, लेकिन जो वो ज्वेलरी खरीदने आई जाएगी तो वो मतलब करोड़ रुपया डंप कराएगी, तो उसको दुगने पैसे देगी। उसमें करोड़ रुपया घटाने में नहीं फर्क पड़ रहा, लेकिन आम वाले से लड़ना है। आम वाला कह रहा है 25 रुपए का, नो 35 लगा। मैडम 25 रुपए किलो, नहीं तू 35 लगा। कॉन्वेंट एजुकेटेड होगी ना, तो गिनती आती नहीं। वो कह रहा है बहन जी 25 रुपए बता तो रहा हूँ, 35 लगा, तेरे को पता कुछ। बिल्कुल बुद्धू बना रहा है। बोला अच्छा मैडम 35 ले लो। जनानी से कौन लड़ लेगा, ठीक है। तो here we complete the litigation part. I think लास्ट हाँ शरद जी बोलिए। आपने किडनैपिंग का बताया, तो अगर बच्चा खुद से गुम हो जाता है तो उसका क्या कॉम्बिनेशन रहेगा? सर वो कई पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उस तरीके से, जैसे बच्चा गुम हो गया, घर नहीं आया, तो either he is kidnapped or he is met with an accident and he is hospitalized, or he has run away from the house, right? So if it is accident and hospitalized, so that we will do in health also, but because you have asked the question, so I will write it down. 1484 plus 6 plus Rahu Ketu accident. He is run away from the house. Sorry, accident and he is hospitalized.
6 is for the injury. इंजरी होगी मतलब इट इज अ ग्रीवियस इंजरी, विल बी हॉस्पिटलाइज्ड, उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, माँ बाप को तो बाद में बताएंगे, पहले तो इमरजेंसी एग्जाम्पल। फिर 3-9-12 इज देयर प्लस सेपरेटिव मीन्स राहु केतु सैटर्न और सन। देन ही हैज रन अवे विदाउट एनी रीजन, उसका दिल नहीं लग रहा, वो जो भी है ही हैज रन अवे। और अगर 5-8-12 के साथ में 3-9-12 है तो एक गंदी लड़की उसको भगा के लेगी, गंदी लड़की। ओके सर, थैंक यू। तो इसमें भी नॉर्मली राहु केतु सैटर्न होगा, इसमें राहु केतु और सन ऑल्सो, लाके सन। हाँ सन नहीं होगा वैसे, क्योंकि वो बुरे प्लेनेट होंगे, सन नहीं होगा बुरे प्लेनेट। सिमिलरली फॉर मतलब स्कैंडल असते हैं ना, सेक्स स्कैंडल, 5-8-12 3-9 गंदी लड़की को भगा ले, हमारा बच्चा तो गंदा हो नहीं सकता, तो बोला था उसको, तो बोला था बेचारे को, तो गंदी लड़की थी, जादू कर दिया लड़की, जादू करनी थी वो अपना लड़का जादू करनी, हमारी लड़की भाग जाए तो लड़का गंदा उसको भगा के ले गए। सर इसमें जो लास्ट वाला है इसमें सैटर्न भी है, नहीं आई कर राहु केतु से नहीं नीचे वाला जो है, हाँ उसमें भी राहु केतु से चलने से कुछ भी हो सकता है, इसमें भी राहु। सर जी हाँ एक्सीडेंट तो गंदी बात है, गंद बहुत गंद हो जाएगा, तो मतलब इंजरी। अब जो एक्सीडेंट है वो तो बता के नहीं होगा, जो ये भाग रहे हैं ये खुद से प्लानिंग करके भी भाग सकते हैं, मैं नहीं बताया। हाँ जी बोलिए सर, एक क्वेश्चन है, इसमें 3-9-12 तो ट्रैवल का भी इंडिकेटर है, प्लस सेपरेटिव उसमें भी चाहिए, उसको अलग कैसे? हाँ वो बताया ना सर, सेपरेटिव चाहिए, लेकिन 5-8-12 प्लस 3-9-12 है, so that the reason for travel is scandal, reason for travel is scandal। ओके सर मेरे पास 2 हॉरोस्कोप है, उसका थोड़ा मैरिज का प्रेडिक्शन करना था। ओके क्या हॉरोस्कोप है? हाँ सर। सर एक है 02-10-1980 हाँ जी सर। और टाइम है 2:57 सुबह को, मतलब AM। प्लेस ऑफ बर्थ दुर्गापुर। क्या इसमें प्रेडिक्शन करनी है सर मैरिज। सर मैंने कर रहा था तो मैं गेस किया था दिसंबर 12, मतलब हाँ दिसंबर 2015 के अंदर। आप देखिए ना जरा। एक मिनट सर देख, ये सबको देख लेते हैं। अब ये हॉरोस्कोप देख लेते हैं सर, उसमें ना जैसे सारे प्लैनेट देंगे। केतु इज पॉजिटिव फॉर मैरिज, केतु इज पॉजिटिव फॉर मैरिज। 2-7-11 is there, 1-6 is there, but 1-6 there is on the top, right? So it is more positive. Venus is weak, it is signifying 1-6-10, only 2 is there, so Venus becomes very weak, almost denial, but 2 is there, there is a hope. Sun is mixed, Saturn 11, 8, sir, 1 by 1, yes, okay. Moon is 11, 1 and 2-11, so 2-11 in the sublord, so it is powerful. Mars becomes weak because 1 and 2, 1 in the nakshatra, 1 in the sublord and 2. Rahu is strong, Jupiter is almost denial, 1-1-1 and 2 is there, so it is almost as Saturn is also becomes weak because 2-7 in the planet, 2 in the nakshatra and 1-10 in the sublord. So 1-10 is in the sublord and the whole combination is 3-10. What I'm saying is 2-6-7 in the planet, 1-2 in the sublord, 1-2 in the nakshatra and 10 in the sublord. Now
2, 6, 7, 1 negative and 2 positive in the planet, 1 negative and 1 positive in the nakshatra, and 10 is negative in the sublord. Now 6, 1, 10 जो है, it is more powerful because it is the full combination also. 1, 6, 10 dinner. Yes. 1, 6. See, what I have told you is when sublord is negative and it is supported by the nakshatra, and when full combination is there, then it becomes more powerful. So then Saturn becomes very weak. Yeah. Now coming on to Mercury, 2, 11, 11 and 1. So Mercury becomes strong. Although the sublord denies, so Mercury becomes strong. So the positive are Mercury, Ketu, strong ones. Mercury, Rahu, 2, 11 हाँ ठीक है ठीक है. Ketu and Moon are good. Mercury, Rahu are excellent. Ketu and Moon are good. And denials are Jupiter, Saturn, Mars. Sun is mixed. So that means marriage is possible. In Saturn Dasha, marriage is difficult. But in Mercury Dasha, marriage is possible. Now Mercury, Venus is in operation. Mercury is strong. Venus is natural significator. So we can hope in Mercury, Venus, Rahu. So if the transit comes, then it is possible. Otherwise, we'll have to wait for Mercury, Venus, Mercury. Because Jupiter, Saturn will not give. ये तो अभी बस गया. Mercury तो क्या? Mercury, Venus, Rahu तो sorry गया. तो इसमें अभी मैंने आपको ट्रांजिट नहीं सिखाया, मैं आपको सिखा दूंगा. तो धीरे-धीरे प्यार को बढ़ाना है, हाथ से उधर जाना. तो अभी Mercury, Venus, Mercury will give the marriage. Can give the marriage if Mercury, Venus, Rahu has not given. तो this is the prediction. This is how we'll do it. ठीक है सर, आप बताएं सर. सर तो फिर कब तक, मतलब उसको बता सकते हैं कि कब तक आपका मैरिज हो सकता है? Mercury, Venus, Mercury सर, जनवरी 2016 to May 2016. ये आपको 5-6 मंथ मिल जाते हैं. ओके और हाँ सर, और एक ऐसे हाँ बताओ क्वेश्चन बताओ. सर हम ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ इस डेट पे होएगा ही होएगा. जैसे अब सर वो फिर ट्रांजिट मैंने नहीं बताया. ट्रांजिट आपको ठीक बता है. दूं. हाँ बताइए सर. हाँ सर, एक है 1996 मार्च. वहाँ फिर आगे मत बोलो यार. सर वो 6 मार्च 1990. ठीक है सर. 8:18 AM मतलब 8:18 और दुर्गापुर. हाँ जी सर, क्या देखना है? सर मैरिज और नेचर भी. नेचर तो सर एरीज ascendant है तो, एंड इफ मार्स इज गुड एंड मेजॉरिटी प्लैनेट्स आर 5, 9, 11 लाइक, है ना. तो मेजॉरिटी प्लैनेट्स आर 5, 9, 11 and 7, 8, 12 is there, then it is aggressive also. So some planets are showing 7, 8, some planets, and 1 or 2 planets are also showing 2, 1, 6, 8. 2, 1, 6, 8 which are showing Mercury and Ketu. 7, 8, 8:18 सर AM. ये क्या हुआ? 9:24 ये क्या हुआ? हाँ सर हो गया 8:18. 6th March 90. हाँ ठीक है. तो अब the thing changes, so it is 7, 8, 12, right? The ascendant is Mars, which is signifying 1, 6, 8. To some extent it is depression, not completely, but majority planets are signifying 6, 7, 8, 12. Moon, Rahu, Jupiter, Mercury 4, and rest are okay. So 7, 8, 12 is there, but wherever there is 7, 8, 12 there is 2, 11 or 5, 11 etc. तो थोड़ा गर्म तो तबीयत है. पॉसिबल रहेगी अगर हस्बैंड का भी 7, 8, 12 है फिर तो ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को मारपीट के ठंड पड़ जाएगी. लेकिन अगर हस्बैंड का 2, 1, 6, 8 है फिर नहीं. सर लड़का है ये. चलो फिर लड़की का 7, 8, 12 होना चाहिए. दोनों के पास अगर वो होते ना सर एटम बम तो फिर फटते नहीं है. एक बार जैसे तो बेलर देखा, उसने भी तो थप्पड़ मार दिए, फिर दोबारा से नहीं होता झगड़ा करो. तो पता है वो बेलन उठेगा तो वो थप्पड़ भी लगेगा, थप्पड़ उठेगा तो बेलन पड़ेगा, तो वो दोनों में फिर शांति
सर फिर फिर मैरिज का पॉसिबिलिटी क्या है मतलब? हाँ, अभी मैरिज तो अलग चीज है। अब मैरिज में जो है सेचन जो है वो मैरिज को ऑलमोस्ट डिनाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा। 10 पूरा कॉम्बिनेशन। अब केतु जो है वो पॉजिटिव है, वीनस पॉजिटिव है, सन नेगेटिव है, मून मिक्स, हाँ, मार्स इज नेगेटिव, राहु इज पॉसिबल, Jupiter is positive, Mercury is positive. So as per the what goes principle goes, the marriage will happen in 2029, right? क्योंकि 2029 as per principle. And now we will never be able to tell this. ये बता नहीं पाएंगे, बताएंगे तो वो हमको रिजेक्ट कर देंगे एस्ट्रोलॉजी। हाँ एस्ट्रोलॉजी, तो फिर हम एक कोई प्रेयर बता देंगे थोड़ी कमजोर है, ऐसे कुछ ना गोलियां देंगे उसको, जितनी वो खा ले। तो सर ये रेमेडीज से भी क्योंकि सैटर्न का रेमेडीज से मुश्किल है क्योंकि सब लॉर्ड और नक्षत्र जो है काफी स्ट्रॉन्ग है आपके 6 1 तो 11 वो पूरा कॉम्बिनेशन। इफ दी सब लॉर्ड वुड हैव बीन सिग्निफाइंग ओनली 1 10 नहीं होता, फिर भी एक उम्मीद हो जाती है। अब उम्मीद काफी कम हो गई है क्योंकि 1 6 10 कंप्लीट कॉम्बिनेशन मैरिज वाले हैं ही नहीं 11 ही है। हाँ, तो वो फिर उम्मीद कम हो गई है। तो जुपिटर की अंतर में नहीं होगा मतलब? नहीं सैटर्न ही वो है ना महादशा, मतलब महादशा अगर बिल्कुल डिनाई कर दे तो फिर क्या जीरो ही है। करें, क्या करें? तो ऐसा नहीं कि वो मतलब अंतर भी बहुत स्ट्रांग हो जाए और सर दशा में कुछ थोड़ा सा होना चाहिए, इसमें है बट आप 1 6 10 बहुत ज्यादा आ गया सर, ब्रेक ज्यादा है उसकी वेट बहुत ज्यादा है इसमें 1 6 10 की। तो ऊपर 10 11 फिर 6 11 फिर 1 10, तो 1 6 10 फिर मतलब मरकरी के महादशा में वो शादी हो सकती है? हो जाएगी सर, क्योंकि डिनाइल नहीं है मैंने तो अभी उम्र तो 38 साल में हो जाएगी, ठीक है ना, 38 कोई ऐसी बात। तो कौन है, बंगाली है क्या? हाँ सर। बस ठीक है, तो फिर तो ठीक है ना, बंगाली करता ही इसलिए सर एक बंगाली तो 38 39 में ही। हाँ जी सर जी एक मेरा भी मैरिज का ये क्या देखो मैरिज मैं एक मिनट सर। हाँ सर 5 12 90 22 10 22 10 दिल्ली। हाँ जी, ये सर बेटी की तो नहीं है, बेटी है बेटे की, मुझे पता अब बोलने में मुश्किल हो जाना है, गड़बड़ ना हो ना। अब ये मतलब जो हो गया ये मरकरी, अब इसमें पूरा देख लेते हैं। मरकरी थोड़ा टफ हो गया सर, मरकरी बहुत कमजोर हो गया। When you see sir, Ketu is almost very negative, right? And 6 and 12 is there. Venus is always positive. Sun is positive. Moon is very weak. Mars is excellent. ठीक है? Because it is signifying 2 and 11. Rahu is 1 6 7 8 9 12 2 4. So 2 and 7 will signify, and 5 12 3 in the sublord is neutral. So Rahu is positive. Jupiter is positive. 6 9 12 3 5 12 4 5 11. So 11 in the sublord will defeat 6 in the planet. So Jupiter is positive. Saturn is very weak but possible. Not very weak but positive, because 6 7 in the planet, 2 in the nakshatra and 10 in the sublord. Not 10 in the sublord will not be able to defeat 2 because both are opposite. So when nakshatra and sublord are opposite, then the strength of the sublord decreases. So Saturn will defeat 10 will not be able to defeat 2 and 7. So Saturn is possible. Now in case of Mercury, Mercury is almost denied. 1 6 in the nakshatra, 6 7 in the sublord. So marriage will be delayed. Marriage will be delayed. Sir, delay है sir marriage. तो ये तो कितनी एज हो जाएगी? 32? माय गॉड सर,
डिले बताइए डिलीट कब तक करना था सर, बता देना। जैसे मरकरी, जैसे ना सर, मरकरी राहु जो है वो करा नहीं पाएगा, क्योंकि मरकरी इज वीक। अगर यहाँ बहुत स्ट्रांग होता राहु तो करा पाता, तो वो करा नहीं पाएगा। दैट मीन्स केतु वीनस में जाके बनती बात 2022, तो वीनस इज नेचुरल सिग्निफिकेटर, केतु में 7 नीचे तक आ रहा है तो केतु भी वीक, बट डिनाइल नहीं है, ये तो मुश्किल हो गया। तो केतु वीनस में होता है सर 2022 साल। तो केपी वालों को दिखाया था, उन्होंने इसी साल का फरवरी का बोला था। सर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं मतलब कुछ चांसेस नजर नहीं आ रहे तो सर वट जो हमारा जो सिस्टम बता रहा है सर, वो यही बता रहा है, जिस तरह से हमारा है तो है। सर एक डिटेल आपको बताइए सर, देखा नहीं मैंने, अभी देखता हूँ। सर जी, हेलो हेलो। 9 फरवरी 81। यस। और ये तो ऋतु का ही का आया हुआ, काफियों के आए हुए हैं भाई। ये तो 1 मिनट ठहरो, सारे निपटा देते हैं, 2 मिनट लगेंगे। तो पहले ऋतु जी से शुरू करूंगा, घोष साहब। ओके। लेडीज फर्स्ट है, 29 मार्च 82। थैंक यू सर। 20 वो देखा ही नहीं, 29 मार्च 82। तो बड़ा नहीं 2 मिनट लगेंगे सर, और कोई फर्क नहीं सर। मुझे भी एक देखना था। अब कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं। इलाहाबाद, राहु एंड वीनस, ये क्या हो गया 82। राहु इज denying marriage, Ritu ji. It is say 610 in the planet, 7 will be defeated and 610 again in Rahu. Yes, sir. Yeah. So it denies. So we'll have to go to Jupiter. Jupiter also denies. Oh, again let us see all the lines. Ketu is positive, Venus is positive. एक मैडम बोलना हो ना, फिर आप ऑन कर देना तो इको आ जाती है। चलो सर मार्च में दिखा रहा है बस पूरा कॉम्बिनेशन का। मैडम ये नहीं, मार्च नहीं, केतु इज पॉजिटिव, 610 इन द प्लैनेट, 711 इन द नक्षत्र, तो केतु इज पॉजिटिव। Venus is positive, 711 35 3789, Venus is positive. Sun is possible but very weak, because 7 in the sublord, 610 in the, तो वीक हो जाता है, नेगेटिव नहीं है। मून भी पॉसिबल है, मार्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉसिबल है, राहु डिनायल, जुपिटर डिनायल, सैटर्न डिनायल and Mercury denial. But unfortunately, Dasha is a denial, so the possibility of marriage is not there in Rahu. Then Jupiter is also denial. And Jupiter is also a denial, so the marriage possibility from our astrological knowledge is not there. तो नहीं है तो नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब दूसरी हॉरोस्कोप है 17 जुलाई 82, सहीवाल, पाकिस्तान। सर ये टाइम 2:45 है। ठीक है सर जी, 17 जुलाई 2:45 सहीवाल। सर सही वाला तो फिर जैसे आप बोलो वही सही है सर। सही वाल AM है मेरे क्या, मिनट देख लेते हैं। इट इज PM, so let us make it PM. Okay sir, we'll make it PM, so it becomes 14:45. So we'll have to tell the marriage. So Jupiter is just started, Jupiter is positive, so marriage can happen from Jupiter Saturn anytime. So Jupiter Saturn is positive. Rahu was tough but not negative, but Jupiter Saturn anytime now marriage can happen. So this year मतलब हो जाएगा। अब आ गया नीरू जी का 13 11 82 10 37। अरे भाई आते ही जा रहे, अरे लोग कोई बात नहीं, आते हैं अपने को क्या कहते हैं।
13/11/82 10:37 PM 22:37 ठीक है। तो सैचन जो है इज वेरी वीक, सॉरी जुपिटर दशा इज देयर, जुपिटर इज 469 and 11, so Jupiter becomes weak but not denial. Now let us see all the planets. Ketu 6 7 10 6 7 10, बाकी 4 5 8 9 will not see because ठीक है ना। तो 6 7 10 6 7 10 केतु denial. Venus is almost denial but possible if other planets are strong. Now coming on to sun, sun is possible. 2 6 11 आ गया ना, 2 in the planet, 6 in the nakshatra, 11 in the solar, तो पॉजिटिव। मून डिनाइल हो गया 1 6 10, 2 in the sublord will not be of any use. नहीं, मार्स इज पॉजिटिव, 11 2 in the नक्षत्र एंड द sublord, तो ऊपर का 6 10 डिफीट हो गया। जो राहु है वो नेगेटिव हो गया, 6 10 6 10 and 7, तो sublord was 7 is defeated. Jupiter is weak, Saturn is weak, Mercury is denial. So Jupiter Mars is there. So we can say there is a possibility only because Jupiter becomes very weak. ठीक है। तो अब Mars requires a 7. Jupiter is having 11, Mars is having 2 11. We require a planet which signifies 7 and should be positive also. क्या 7 भी चाहिए और पॉजिटिव भी चाहिए। वो कौन सा प्लेनेट है? एक ही प्लेनेट है, सैचन, और सैचन जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब ओनली पॉसिबिलिटी जुपिटर मार्स वीनस, और जो वीनस है वो खुद का पिटा हुआ बेचारा गरीब है। तो इसका मतलब जुपिटर कमजोर, मार्स स्ट्रांग और वीनस कमजोर में पॉसिबिलिटी बहुत कम है। यहाँ पर रेमेडी काम कर सकती है, पक्का कुछ नहीं है, और हॉरोस्कोप वीक है। अब उसके बाद जुपिटर राहु में तो पॉसिबिलिटी है नहीं। सैचन की दशा जो है वो भी बेचारी गरीब है, तो ओनली पॉसिबिलिटी जो बचती है सैचन वीनस से बचती है। जो 7 जो है केतु का भी डिफीटेड है, तो ओनली पॉसिबिलिटी जो बचती है वो सैचन वीनस की बचती है, वो है 2000 होगा। सर जी इसमें रेमेडी क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? दशा का मंत्र से, जुपिटर का मंत्र और मूंगा मंगल का। जो प्लैनेट पॉजिटिव है उसका जेमस्टोन, जो प्लैनेट नेगेटिव है जिसकी दशा चल रही है उसका मंत्र। जो नेगेटिव है उसको हाथ जोड़ने हैं, जो पॉजिटिव है उसको धारण करना है, उसको दोस्त बना के अपने साथ रखना है। सर गोमेद क्या मैरिज को बूस्ट करता है? नहीं सर, वो 610 बता रहा है, तो वो कैसे बूस्टर लगाएगा सर? ठीक है। अब आ गया आपका 0855 अहमदाबाद। हाँ जी बताइए सर। शादी सर इसमें एक्चुअली जॉब देखना है। 9281 है। यस। इसमें जॉब क्या देखना सर? सर जॉब का सिचुएशन मतलब अच्छा नहीं जा रहा है। ठीक है। वो सर सबको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसकी जिंदगी खराब है सर, प्रोफेशनल जिंदगी खराब है। तो जहाँ जो भी है मस्त रहे। इनका एक्चुअली जॉब चला गया, शी हैज बीन फायर्ड। हाँ तो फिर वो घर में रह ले, अच्छा है, हमेशा फायर ही होती रहेगी। सन में कुछ नहीं होगा सर? सर सारे प्लैनेट, हाँ सन ही इसका अच्छा है। तो सन तो बहुत दिन बाद आना है सर, 2017 के बाद ना, आज तो नहीं आ रहा। हाँ 2017 दिसंबर देख रहा था मैं, तो उसमें कुछ हाँ हो जाएगा? नहीं सर, हाँ हाँ हाँ, वो तो फिर 2017 है ना, 3 साल 4 साल बाद है, वो तो देखी जाएगी 3 साल। 2 साल हाँ है, 3 के बाद है, 1 ईयर 2 ईयर 5 अप्रैल 6 कोई बात नहीं मैडम, 100 और उसको आराम से देख सकते हैं। मेरे को वो भी करनी पड़ती है, करना मैंने समझानी पड़ती है, तो गला फिर ज्यादा असर होता है, बाकी कोई बात। सर इनको अगर कुछ करना है तो अभी फिर क्या सजेस्ट करें? किस दशा का मंत्र? दशा का मंत्र। और प्रोफेशन वाइज कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि किस प्रोफेशन में कुछ होगा बेनिफिट? और नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अच्छा है हॉरोस्कोप है कुछ भी कर लो, जब बुरा हॉरोस्कोप है कुछ भी करके देख ले। अब ज्यादा से आप क्या देखना है इसमें?
सर मैरिज का देखने का, मैरिज और उसका कैरेक्टर कैसे? करेक्टर का तो अच्छा ही होता है सर सबका, ठीक है। अब इसमें 5-12 होता है सर, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा लव है, और 5-6-12 बहुत होता है तो लव टूटता रहता है बार बार, तो इसका टूटता बहुत है सर, फिर दूसरा हो जाता है सर बड़ी जल्दी जल्दी। क्यों टूटता है? केतु 5-6-8-12, ठीक है, राहु में 5-6-12, मार्स में 5-6-12, जुपिटर में 5-6-12, तो बार बार टूटेगा सर, ठीक है। बाकी 5-12 प्यार से बहुत भरा हुआ है, तो जो बहुत बंदा प्यार से भरा हुआ है उसका कैरेक्टर तो अच्छा ही है, ठीक है। फिर अब मैरिज का है तो जुपिटर जो है वो काफी वीक पड़ गया सर, तो जुपिटर के की दशा में शादी की पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। केतु में हो गया सर 7-11-2 एंड 10-6, ठीक है, ओके। वीनस इज ओके, सन डिनाइज 10-1-10, मून डिनाइज 6-10 नीचे आ गया, 2-11 ऊपर है, 6-10 तो वीनस मून डिनाइज। मार्स में 7-11 है, 6-10 50-50। जो राहु है मोर नेगेटिव, तो 6-10-11, 7-10 एंड 6-10-11। जुपिटर इज नेगेटिव, सैटर्न इज 50-50, मरकरी इज ऑलमोस्ट 50-50। तो जुपिटर की दशा में मैरिज नहीं है, सैटर्न की दशा में मैरिज है 2021 के बाद, तो 2022-23 में हो जाएगी, ठीक है। कैरेक्टर अच्छा है, बहुत प्रेम बांटेगा इधर उधर। सर इसका डाइवोर्स भी, सर इसका डाइवोर्स भी हो चुका है। हाँ वो पहले हुआ होगा, वो ठीक है, आगे भी अरेंज मैरिज की थी मगर उसमें डिवोर्स हुआ है इसका। वो मोहब्बत इधर उधर बांटी होगी सर। मुझे नहीं पता ना सर, आपको पता होगा ना, मेरे को ठीक है गुरदासपुर। सर उसमें मेरा एक ऐसा प्रॉब्लम है कि आप दशा भुक्ति का कोई लिंक होगा तो मुझे भेज दो ना सर। अच्छा, अब आ गया ये किसका क्या देखना है सर हमें, डिलेड पेमेंट ऑफ सैलरी गुरदासपुर लिटिगेशन। लिटिगेशन में सर क्या देखेंगे हम, मतलब अच्छा हाँ अभी पढ़ा तो दिया मैंने, ठीक है, मैं तो सारे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो जुपिटर सैटर्न जो है वो लिटिगेशन बताते हैं, बट लिटिगेशन के साथ आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट बताते हैं, क्योंकि उसमें 5-9 है। तो इसका मतलब है कि अगर वो अभी भी जुपिटर सैटर्न मरकरी है, अभी भी अगर वो आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं तो हो जाएगी। और डिले जो प्रोफेशनल लाइफ देखते हैं वो मैंने ऐसे पढ़ाया नहीं है, तो प्रोफेशनल लाइफ मिक्स है, जो 5-8-12 होता है नेगेटिव होता है, 10-11 जो होता है पॉजिटिव होता है, सब जगह मिक्स फिक्स आ रहा है, तो प्रोफेशनल लाइफ अप डाउन ही चलती रहेगी। लिटिगेशन में ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, वो मतलब इसमें कहीं कोई मेजर 2-3-8-12 नजर नहीं आ रहा, थोड़े बहुत ही जैसे है ना, राहु में जैसे 3-8-12 नजर आ रहा है, तो साथ में 10-11 भी है, केतु में 3-4-8-12 है तो है, और सन में भी 3-8-12 है, सैचन में 2-3-8-12 है साथ में, लेकिन 10-11 है। जुपिटर नहीं बताता इम्प्रिजनमेंट, तो ऐसे डरने वाली बात नहीं है, 5-9 है, आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट कर लो कि वो तो आज भी पॉसिबल है, अपने हक में नहीं होगी क्योंकि दशा भुक्ति बहुत कंड्यूसिव नहीं है, लेकिन निपटाना है तो निपट जाएगा। 4-4-93 0124 फरीदाबाद। एजुकेशन का देखना, एजुकेशन ठीक है सर। एजुकेशन के जो हाउसेज हैं वो है 2-4-5-9-11 और 6-8-12 खराब, ठीक है। तो वीनस जो है वो है 2-5-9, तो ये जो है मतलब नॉर्मल सी एजुकेशन है। 2-4-5-9-11 है, 4-9-11 5-11, तो जो फर्स्ट आता है बच्चा क्लास 2-5-9 है तो ठीक ठीक है, सब जगह पे यही है 2-4-9 2-5-9। कॉम्बिनेशन में जो विन है वही जो पॉजिटिव है वो जीत जाएंगे, ज्यादा पॉजिटिव वाले, जो 2-5-9 वगैरह वाले हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो वीनस जो है वो ओके ओके टाइप है, केतु में कुछ ज्यादा जान नहीं है, ठीक है ना, 6-8 ज्यादा, तो अभी कंपटीशन में सक्सेस नजर नहीं आती। कौन है तो कौन सा कंपटीशन, किस चीज? सीए का पेपर दे रहा है, सीए का, तो वीनस केतु को ऐसे नहीं बता रहा, सीए का जो कॉम्बिनेशन है वो 2-11 है, 2-11 बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये पढ़ाई में ठीक ठीक सही है, कोई ज्यादा दम नहीं है। कितने नंबर आते हैं? नहीं बहुत कम नंबर है,
वैसे कैसे आते हैं? वैसे तो ठीक है, सही कह रहे तो हो। ये ठीक है, ये ठीक ही सही रहेगा। सीए छोड़ दे, कोई फायदा नहीं है, टाइम को दिला। ठीक है, अभी तो ज्यादा आपको समझ में नहीं आया, तो पढ़ाया नहीं है। मेनली जैसे ये है ना, सर ये 4911 राहु है, 41195 ये अच्छा है, ये 24। बाकी जितने भी प्लान देखोगे इसमें 2 3 9 4 5, तो ये पासिंग मार्क्स टाइप के बच्चे हैं। वैसे ठीक है, बिजनेस वगैरह में कुछ करे। ठीक ठीक है सर, ओके ओके, मतलब बिजनेस में कर लेगा ये, मतलब नेगेटिव नहीं है, क्योंकि उसके लिए 11 लूवन चाहिए, वो है नहीं। ये 6 10 ये ठीक होते हैं। ठीक ठीक है, गुड गुड। पढ़ाई चाहे लॉ करे चाहे। सर आवाज नहीं आ रहा है। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। सर अभी भी नहीं है। सर वॉइस नहीं आ रहा है। अब आई हो, अब आई। तो here now you can see that Mercury denies marriage, मरकरी की दशा चल रही है। केतु इज मिक्स, ठीक है, 50-50। वीनस इज गुड, सन इज 50-50, मून इज अराउंड 50-50, लिटिल लेस देन 50-50, मार्स इज ओके, राहु इज गुड इनफ but not telling marriage exactly, Jupiter is 50-50, Saturn is nothing we can say. So when dasha is very poor, then extraordinary bhukti can do. So extraordinary bhukti we don't get. That means Mercury dasha में तो मैरिज कुछ नजर नहीं आती, ठीक है ना। तो मरकरी दशा तो ये 2008 से चल रही है, चलती जाए, हमें क्या करती है। बाकी 5-8 और वगैरह हैं, कितने 5-11 5-8 हैं, तो वो हैं, तो वो मोहब्बतें चलती रहेंगी, कोई बात नहीं, प्यार से भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन कंजूस है, पैसा नहीं खर्च करा जी, क्योंकि सैचन फिर भी देखो मोहब्बत पैसा कर पे तो सब खर्चते हैं। नहीं, पता नहीं ये, पता नहीं गर्लफ्रेंड में खर्चते नहीं खर्चते, क्योंकि सैचन जो है वो। तो सर इसका है या नहीं, डिनायल है या डिनाइल ही होगा ना मैडम, नहीं होगी, क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डनरी भुगती चाहिए, वो तो आनी नहीं, तो इसका मतलब वो ऐसे ही प्यार में ही चला जाएगा। तो सर इसका प्रोफेशन कैसा है? मैं बोल दूं? इसका प्रोफेशन कैसा है सर? मैडम उसमें टाइम निकल जाता है ना, प्रोफेशन तो कैसा होगा, उसमें ज्यादा टाइम निकल जाता है, वो काम भी तो है करना, क्या क्या करेगा आदमी। हाँ जी, 24 घंटे ही है आदमी। हाँ जी, हाँ जी मैडम बोलिए। सर मैं बोल दूं? हाँ जी बोलिए लता जी। 31 जुलाई हाँ जी 1975 2:37 AM।
हाँ जी, प्लेस ऑफ बर्थ उडुपी. Udupi. Yeah, what we have to do, madam? What we have to see? Marriage. Oh, so Ketu is 75 sir. 75. I think 31st 75. 31st July 31st 19. July 75. Yeah, I have taken 75 only. 237 hours, right? So Yeah. Ketu is weak but possible but weak. Venus is almost denial types 1616 तो 7 कमजोर हो जाएगा. मीन Venus है तो पॉजिटिव ले लेते हैं, but it is very weak. Sun is also mixed. Moon is almost denial types. Mars is extraordinary good. Rahu is 50-50. Jupiter is denial. Saturn is good. Mercury is good. So Mars Dasha is there. So Mars Rahu I don't know, but Mars Saturn is sure. So Mars Saturn will be the marriage. 2016 means end. Mars Saturn Mars Saturn Mercury like this. तो 2711 भी पूरा हो जाएगा. 27 in Mars, Saturn and having 211 Mercury is having 211. So Mars Saturn Mercury will be marriage. So let us complete here. No, one more. Okay, one more. Okay, madam. 2210 हाँ जी 86 हाँ जी. और 1745 Let's over. जयपुर. हाँ जी, क्या करना ये मैरिज है. है? सबकी मैरिज हो रही है. So Jupiter is almost denial. Dasha is Jupiter. Ketu is almost denial. Ketu is denial. Venus is okay. Why denial, sir? 6, 1, 10, 10. Because Venus 2, 7, 11 and 7 and 6, 10. So more are positive. And it is Venus, so positive. Sun is 6, 1, 10 and 6 again. So this 7 will not matter. So this denies. Moon also denies 1, 10, 10. Mars 1, 10, 2, 11. So 2, 11 in Nakshatra Savlot. So it is possible, strong. Rahu is also okay. 11, 7, 11. 10, 10 are separated out. Jupiter is denied. 10, 11, 10, 11, 1, 10. So denial हो गया. Saturn is possible. 11, 11, 11. Mercury is positive. So Jupiter Mercury जो है वो तो नहीं बताता यार. क्योंकि Jupiter दशा डिनाई हो गई तो Saturn की दशा में ही जाना पड़ेगा. अच्छा. कोई हो गया चमत्कार तो Venus में हो जाए तो कह नहीं सकते, बट प्रिंसिपली तो नहीं हो सकता. मैरिज इज नॉट पॉसिबल. और अगर सिर्फ जुपिटर सैटर्न में होने टाइप तो मतलब पहले के नहीं हो सकते सर. वो मतलब जुपिटर ने डिनाइल कर दिया तो डिनाइल. सैटर्न तो बता ही नहीं रहा. वो सैटर्न तो वैसे ही 11 11 बता रहा है, उसके और मतलब हो सकते हैं. अच्छा. जो ये मरकरी है ये देखो 2 7 11 ये तो पूरा लेके बैठे. और ये इसको भी चले हुए साल हो गया. देखो नहीं हुई ना शादी. इसको भी तो साल हो गया. अगर इसमें दम होता तो एक साल में कुछ ना कुछ तो कमाल करता ही. नहीं करा यार कमाल. ठीक है, करें छुट्टी सर. बहुत हो गई. वो शादी होंगे. Okay, there will be meeting after 2 Sundays because 2 Sundays will be a mela in Delhi. So we have taken a stall there, astrological mela. So we'll be meeting on 1st of March. No, 1st of March on Sunday. सर जी. सर जी. हाँ शरद जी. सर जी एक क्वेश्चन है मेरा. हाँ शरद जी. आपने मुझे पहले वो 2 लेक्चर जो है उसका अभी तक लिंक नहीं भेजा. सॉरी है सर, भेज देता हूँ. और मुझे वो दशा भुक्ति का जिसमें एक्सप्लेनेशन रहेगा वो भी लिंक भेज देना तो मैं वीडियो तो देख लूं. जी बिल्कुल सर. डन. ओके सर. ओके, थैंक यू सर.